Bismillahirrahmanirrahim. So let me just first of all share my own excitement here, and I'm going to give you my own perspective of why I am doing whatever I'm doing. It's been a couple of decades जब से मेरा वो जो जिसे कहते हैं ना चुप लग गई हो, क्या लुत्फ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो. When I lost the very humor of being in this planet, literally. And मेरे दोस्त, I'm a guy of guys. I mean, I was raised up in three brothers. I was the middle child of three boys when we grew up. When we were growing up, so all of my friends of my brothers were my friends. My friends were my brother's friends. So we were like a whole city growing up of boys. So all of my friends started to wither off slowly in my late 20s because I went quiet. So mujhe, that observation mode and that reflective thinking, meri jo hai na wo, it just made me, it was not depression, and I'm pretty sure everybody goes through this. Nabi Islam ne shah farmaya ke मोमिन का जो एक दिन होता है ना, उसके आने वाला दिन, जो आज का दिन है वो गुजरे वाले दिन से बेहतर नहीं है. तो इस्लाम समझ नहीं आ रहा उसको अभी तक. So I was keep on cringing on my own self at internally के where is my improvement. मुझे एक बहुत बहुत बड़ा सानहा जो मेरे साथ हुआ था अंदर से, तो तूफान चल रहा था कि मुझे अभी तक ना समझ नहीं आ रही थी कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में जाते थे. So why is that not the most important event for every man, every woman? And मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे वो गारे हिरा चाहिए ना. And I mean, it's a true story. I mean, these are the very words I used to think about. कि why am I not settled in this, and I was in Toronto, I remember at that time, and मुझे हर बंदे से बात करते हुए मेरा एक ही कॉमन स्टेटमेंट चल रही थी कि do you not feel suffocated? Do you not feel as if you're stifling? And people used to as soon as they started to think I'm crazy, I used to leave the conversation like, yeah, it's all right, let's just keep doing whatever we're doing. इस तरह करते करते मेरे मामलात जो थे ना लेट 20s के अंदर, I started to go so quiet that I wanted to find that peace, but it was not मैं कोई वो gurus and Zen state नहीं chase कर रहा था. I just wanted to see why am I not finding humor in anything anymore. So वहां से फ्रॉइडियन रिग्रेशन कहते हैं ना उसको, आप एक खास स्टेट में बोलते हैं. मोस्टली साइंस अब पहुंच चुकी है इस बात को, ये बात बताती है साइंस लिटरली कि 40th ईयर में आपके साथ ये वाकया हो जाता है, मतलब क्लोज टू 40, राइट बिफोर 40. और मुझे 20 साल पहले हो रहा था ये वाकया. So I was thinking this is something else. Maybe I'm not well, and most of my friends were doctors, so I was calling all of my friends कि check करो मेरे दिमाग में कोई मसला शुरू हो गया. I think maybe I'm in depression, but I'm not in depression. I mean, I've got everything. Maybe I've lost the purpose. Maybe, I don't know. I mean, there's so many questions I have to answer to my own self rather than to people. And for that, I regressed back to my own books, my own teachers. And I just started to find new meanings of the same verses of the Quran and the Hadith and the science and the physics and the biology, literally biology, mostly psychology. मुझे हर चीज दूसरी तरीके से नजर आना शुरू हो गई थी. Maybe मैं ये सोचता था कि हम इसको eisegesis कहते हैं psychology में ना. Maybe I was trying to pick whatever I really wanted to pick at that time from the same books I used to read. So already a psychologist by then? Yeah, of course. Yeah. I was not, I was in the corporate, so I was not practicing anything, but, corporate में होता क्या है कि, पाकिस्तान में तो जिसको माइक्रोफोन मिलता है वो गुरु बन जाता ना. तो वहां पे पब्लिक स्पीकिंग के पीछे एक लॉ है कि you cannot hold a level of influence unless you are licensed or have a very credible degree in any of these sciences, which is one of them is psychology. So मेरी कंपनी ने मुझे करवानी थी ये सारे के सारे sponsorships के आप करें, because I was in training and development. So but that happened way before. This happened way later. In my late 20s, I was professionally doing well. I was on the cover of magazines because of the kind of money I was earning, because of the kind of trajectory मुझे मिल गई थी. पाकिस्तान में जब आया तो तब भी I was on a fast track of promotions over promotions, and everything was going well, but I was the quietest person in town, literally in town.
And I was the funniest man in school, funniest man in college and universities, funniest man in my own friends circle. I mean, sense of humor used to be the thing of my family. My father was the funniest man I know. And all of a sudden, ये वाकया मेरे साथ हुआ और उसके बाद I found it so easy to open books. So easy. It was like that's something that is to lock and key principle. नहीं होता चाबी जो है वो ताले में फिट हो जाती है. It made me so satisfied, internally to read, as if कि जैसे भूख में खाना मिल गया हो आपको. तो and I used to dwell into concepts over concepts, और मुझे पता ही नहीं हो रहा था दिन कब गुजर गया, रात कब गुजर गई, literally. So my family used to tell me कि क्या टाइम हो चुका है दिन का. मुझे पता ही नहीं था कि 24 घंटे हुए हैं, 36 घंटे हो गए हैं किताबों के अंदर, एक दो बुक्स के अंदर घुसा होता हूँ. So, and it's not like I was trying to find something in particular. I was just going through, the same kind of concepts के किस तरीके से meanings of the same words have been taken maybe out of bound or out of context. And that's how it started for me. I started explaining the same things as if कि वो नहीं होती वो जो amazement and wonder में अपने ही दोस्तों को, अपने ही भाइयों को कि you know what, this is what we read, and you know what this actually means. ऐसे करके मैं बात करता हूँ. So it became a very crazy 5, 6, 7 years before everybody started running away from me, because this man is just going to start to talk about some core concepts. Preacher. You were a preacher. yeah, I swear. मुझे याद है मैं जब टोरंटो से पाकिस्तान आ रहा था ना, तो पासपोर्ट के ऊपर ना पाकिस्तान एम्बेसी में उन्होंने कहा वो वहां पे उस वक्त लिखते होंगे, अब आई डोंट रिमेंबर अभी लिखते हैं कि नहीं, पासपोर्ट पे प्रोफेशन क्या है. एंड I said religious speaker. I was dead center inside the corporate. And he looked at me and he said, और पाकिस्तानी था ना, he said, आपको कभी मैंने सुना नहीं पहले. And I said, yeah, मुझे किसी ने भी नहीं सुना अभी तक. But it is so ironic. Yeah, it is so ironic कि मैंने I don't know why I picked that word out, मैं आजकल भी सोचता था जब भी ये पासपोर्ट सामने से गुजरता है, I just keep thinking about why did I say that? It was like, one of those things. But I'll tell you this right now, my central concept was the Ghar Hira, literally. अभी तक मैं Ghar Hira के concept से, इसे कहते ना, underwhelmed नहीं हो सका हूँ, if there is such a concept. I'm still overwhelmed by the very concept कि आप सोचें इरम कि आपका बेटा बेटी बहन भाई कोई अचानक लाहौर के किसी एक खास पहाड़ के ऊपर जाता हो और कई दिन वहां पे रहता और वापस आता और comes back to fascinate you, with his own concepts and the way he's thinking about certain things which are relevant to you, तो आप फिर भी we're not designed to take that sort of concept with us. We'll be like, यार कोई मसला है इस बंदे के साथ. That's what we're going to think. So I keep telling girls right now, especially young girls in their, early teens, late teens, कि अल्लाह ताला ने ना लड़कियों को एक खास gift दिया है, which boys never know. I mean, when I had my daughters, that's when I knew, when I had my daughter, I was like, yeah, ये तो that little finger. Yeah, it's you guys are natural born reflective thinkers. मुझे ये न्यूरोलॉजी बाद में मैंने पढ़ी ना, मैंने तो बहुत बाद में न्यूरोलॉजी में छलांग लगाई है इनएविटेबिलिटी की वजह से, क्योंकि साइकोलॉजी मुझे सेटिस्फाई नहीं कर रही थी. I wanted to go into real science. Well, not that, no offense to all the psychologists, but when you go into neuro, you find out that that's the real science behind all of whatever we go through. And I spent a decade before I could actually come out with some sort of a sense कि neuro की असल में sense क्या है. And that's when I found out कि there's certain things in a woman's brain जो कि designed to do reflective thinking है, जो कि आदमियों को बहुत late develop करनी पड़ती है adaptive behavior के through, and which we do, by the way. It's not that men are handicapped here, but we can. But girls are natural born reflective thinkers. So that's your Ghar Hira right there. You just have to find out where you can be comfortable with your own self. You can talk to yourself. You embrace yourself. And what that actually means is, ये किताबी बातें या दीपक चोपड़ा का कोई मंत्र नहीं बता रहा हूँ. What I'm saying is, no, literally, that as soon as you go into your Ghar Hira, you become oblivious. First you know the translation
of how shallow those words are, which you used to care so much about from people. And then you find out that there is a language that you actually can speak with your own self. It's not English, Urdu, or anything. There's a language that you speak with your own self. And it's such a fast language, and you understand the reality of all truths and all things which are false so clearly if you get to know yourself. Or it's only though for those people जिनको समझ आ रही होगी ये बात, जिनके साथ ये वाकया हो रहा है कि हर एक को अल्लाह ने ऑप्शन दी हुई है, सामने गारे हिरा होते हैं हमारे, मगर हम जान के उस तरफ देखते हैं. मेरी भी गारे हिरा का वाकया हुआ था, बट मच लेटर इन लाइफ. मेरी तो शुरू, mine was my journey started with a lot of rebellion. I was an only daughter. I had two brothers and lots of male cousins. Belonged to an army family, so a lot of very masculine type of men around us. And from a very young age, ये समझ मुझे आ गई थी कि I am somewhat of Allah Ta'ala has blessed me with intelligence. Top वॉप करती थी, तो ये लड़कों से मुकाबलाबाजी मेरे अंदर बड़ी यंग एज में. एक तो इट वाज अ मैटर ऑफ सर्वाइवल, क्योंकि वो अपने साथ खेलने नहीं देते थे, राइट? कि अगर रोने लग गई तो लड़की 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 कह के वो मुझे निकाल देते थे, निकालो इसको, इसके साथ नहीं खेलना. और सो आई वुड प्ले गेम्स लाइक चोर पुलिस, वो जो तरकोनों से मार के खेलते थे दरख्तों पे चढ़ के. I never played with dolls. मैं मैकेनो सेट के साथ खेलती थी, because that was how I could fit in and feel a sense of connection. और फिर एक certain age के ऊपर आके I was told you can't do these things anymore. क्यों? Because you're a girl. Of course, I understand from my mother's perspective that she was doing what was culturally appropriate, of course. But in my young mind, it made no sense because my whole identity was around being a tomboy. दोपहर को साइकिल लेके निकल गए अम्मी अबू से छुप के. अब जाहिर है my mother would be scared कि 13-14 साल की लड़की शिकल दोपहर में जब सब सो रहे होते हैं ये अकेली साइकिल लेके निकल जाती है. No, that's not safe for a young girl. तो उस पे जी, दिस वाज इन पाकिस्तान. आई ग्रू अप इन पाकिस्तान, कैंट में. तो वो अम्मी ने मेरी साइकिल्स ले ली. तो उसके बाद मैं जो बैटमैन की साइकिल होती थी सोहराब की वो लेके निकल जाती थी. वहां पे किसी ने शिकायत लगा दी कि दोपहर को ये रोज साइकिल चलाने निकली होती है, दोपहर में, गर्मी में. So my seriously thinking about it today, with the kind of confusion is around there in gender identity, I would have for sure thought कि ये गलती हो गई है, कुदरत से I should have been a boy. I hated being a girl after that because so many things that I wanted to do, I thought like boys, I played with boys. So when I was told I couldn't do so many of those things anymore, I became very rebellious and I started to resent God from a very young age. कि जब मेरी मर्जी नहीं थी, मेरी choice नहीं थी, तूने मुझे इस gender में क्यों पैदा किया? All the fun seems to be going to all the boys and I'm stuck at home and I don't want to play with dolls. It just didn't make sense to me. So then I found escape in books. और अल्लाह ताला अम्मी मेरी को जन्नत नसीब करे. She was really one of the most, I would say, probably not one, the strongest person I have ever met. बड़ी दबंग खातून थी, but she was also quite conservative. तो उनका माइंडसेट ये था साहिल कि लड़की को कोई घरदारी आनी चाहिए, कुछ इस तरह का काम आना चाहिए. Literally, I heard this phrase so many times from different relatives that she's brilliant, but what a waste, because she's a girl, what a waste. लड़की को तो लड़की ने इंटेलिजेंट होके क्या करना है? I heard that many times growing up. So when I did pre-medical, got good grades, और मैं उस time पे I wanted to do genetic engineering, जो कभी उस वक्त किसी ने सुनी भी नहीं थी. And I really good. And I was my biology teacher actually asked my mother, she really begged her कि she's gifted in this, let her pursue this. But अम्मी ने कहा किसी सूरत में नहीं, कुड़ी को इस तरफ लगाना ही नहीं है कि ये किसी डिग्री शिग्री के चक्कर में पड़े. और पंजाबी में, you understand Punjabi, Sahil? Oh yeah, absolutely. My family is from Lahore, yeah.
तो वो पंजाबी में अब्बू को कहती थी कि जे इस कुड़ी दे हाथ डिग्री आ गई ते जे है वस गई ते मैनू कहना. So वो ये कहती थी इसको तो डिग्री नहीं. I was pretty, strong headed. अब्बू की लाडली थी. अब्बू had always taught us, he raised us because he's an engineer. He raised us with always questioning things, right? कि अगर ये पंखा है तो पंखे के 3 ब्लेड हैं तो 3 ब्लेड क्यों है, और ब्लेड में वो खम क्यों है, और वो कितने डिग्री का एंगल है, and why, like things like that. He would make us think and question everything. So I started resenting God, and when time came, तो रो पिट के फिर अच्छा जी MBA करने दें, अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं करने दी, लम्स में दाखला हो गया. एंड अम्मी ने कहा नो वे. शादी हो गई. शादी भी इसलिए की, रिश्ता ऑस्टन से आया हुआ था. मैंने सोचा लो जी ऑस्टन में जाके UT ऑस्टन में MBA कर लूंगी, something like that. But I won't go into the details of that. That was my first marriage, ended up being abusive, and then I got divorced after 8 years, had a daughter from that marriage, and then my relationship with Allah Ta'ala during that time only got worse. इतनी वर्स थी साहिल, कुछ लोग इसके ऊपर कोई फतवा ना निकाल दें, but when I was 18, I remember, I want to mention another thing here, that my mother was a very religious woman. जिस तरह से कुछ लोग born with a tendency of होते हैं ना, they're very religious, and she was a very pious, बहुत इबादत गुजार खातून थी. She was actually also a founding member of Al Huda. And I grew up with the influence of Al Huda on me very strongly. And I want to mention here that I have deep respect for Dr. Farhat Hashmi and the work she's done, but I disagreed with a lot of the things that Al Huda was preaching and the kind of stuff they were talking about, especially regarding women's rights, about, and so I would ask a lot of questions which did not sit well ever with anybody. So I started to just hate God. Like, कि तुम्हें नाकिस भी बनाया है, तुम्हें नाकिसुल अक्ल भी बनाया है, तुम मान जाओ कि तुम नाकिसुल अक्ल हो क्योंकि अल्लाह यही कहता है, right? Which Allah doesn't, but that's what I was told. And you are inferior to men, which I was like, there's no way I'm going to accept that. And in सारी कहानी में जो villain था वो अल्लाह ताला. So I basically, at one time I declared it to Allah Ta'ala. I said, I know you exist. And I know that you're very, very powerful. You can destroy me in this spot that I'm standing. You can finish me. The one thing you can't do, this was me at 18 years old. I said, the one thing you can't do is make me love you. So I want you to know that I hate you. I hate you, and I know you will put me in hell for this, whatever, but I want you to know I hate you. I was so angry at Allah Ta'ala. And I'm sharing this with you because unless we really realize that there are young girls who are at the very moment going through a process like this where they are asking questions and they're being told to shut up and not ask questions, what happens is that then they become very distant from Islam and from Allah Ta'ala. So I was a walking, talking example of that. So after my second divorce, I started to, which was also abusive, that's when I started to basically say, you know what, something is wrong. I have to take responsibility for why my life keeps going through these cycles of destruction again and again. I am the only common denominator in this picture. So कुछ ना कुछ तो मैं कर रही हूँ ना, कहीं ना कहीं तो मेरी responsibility बनती है, and I want to find out what role have I played in my past so that I could change that for my future. So with that, I started to go into the Western self-development movement. I was fortunate enough to really learn from some of the top teachers in the world in the consciousness movement and the spirituality and self-development. Side by side, मैंने थोड़ा सा सूफीज़म में भी देखना शुरू किया. अभी तक अल्लाह ताला के साथ और इस्लाम के साथ रिलेशनशिप, कुछ और वाक़यात हुए जिससे वर्सन ही होती रही. I fell in love with balanced personalities and emotional intelligence. उस जमाने में तो EQ और emotional intelligence इतने ट्रेंड में नहीं थी, but that's what I really started to
just fall in love with, and I valued that. And I, logon ke fans, they would be fans of Hollywood stars or Bollywood stars. They meant nothing to me. I was total fans of like people that had it figured out, तो मैंने जब ये शुरू किया, what happened was कि इस्लाम और अल्लाह ताला से हालात मेरे मखदूश थे, but रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैं बहुत इम्प्रेस थी. Whenever I read about him, that much I knew कि this personality was a very, very unique and beautiful personality. So emotional intelligence, और उसमें जब भी मैं अपनी research करती थी, and I wanted to find an example of excellence, अल्टीमेटली वहीं पे आके सुई रुकती थी. किसी भी रोल में आप देख लें, रोल एज अ हस्बैंड, रोल एज अ लीडर, रोल एज अ प्रॉफिट, रोल एज अ स्टेट्समैन, एज अ वॉरियर, एज whichever, as a friend, as a father, as a son, whichever role. And we have so much historical evidence about the different roles that Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam played. भी उसमें देखती थी, it was to this level of excellence. So I started to study his life as an objective, kind of like a researcher, not with that reference that we have for him as a prophet. उनको human से हम ऊपर दर्जा देके फिर उस reference से देखते हैं. I wanted to see him as a human being. I wanted to study him as a human being. And the more I studied him, the more I just absolutely fell in love with him. And I said, okay, so there is absolutely no question in my mind that he was a prophet, and he was the most exalted example of excellence I have ever seen. And he preached Islam. He loved Islam. So I need to give Islam a second chance. I need to look at Islam again. Maybe the information I got was not correct. तो वहां से मेरी फिर जब जर्नी शुरू हुई, and it's so beautiful कि आप गारे हिरा की बात कर रहे थे, एक तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ने गाइड किया, राइट? उनकी हयात तैयबा के एग्जाम्पल ने आपको गाइड किया. And for me also, it was Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam who guided me back in a way, because his personality, even after almost 1,500 years later, it still pulls you. तो मैं भी फिर वो चुप के रोजे से मैं भी गुजरी, जिसमें my lips were sealed. When people asked me and talked to me, आपने देखा होगा मैं बहुत बातूनी हूँ, बात करने की बहुत आदत है मुझे. I could not speak. When somebody would ask me, and by this time I was running a telesummit, so I was a, kind of like an interviewer and a speaker, and people would ask me and I would say, it's as if I have lost words. I no longer have words. I feel so lost. Everything that I have known and understood, which by that time I understood a lot about the Western spiritual movement and, mind sciences and all that. I said, everything that I have understood has come under question. And I feel like I'm totally ignorant and I have no answers to anything. So when people ask me, I feel like I have no words. और उसके बाद वही जो आप बात कह रहे थे, that was my गारे हिरा. Suddenly, things started to make so much sense, और मेरी सुई आके वापस रुकती थी अल्लाह पे. The answer to every problem, everything that we face can be solved with this understanding that the source of connection, our source of connection and our source of strength has to be Allah Ta'ala, because everything else is an illusion, and it's an attachment to an illusion which is temporary, which could be there or could not be there. But when you attach to Allah Ta'ala, He's permanent. He's not going anywhere. And therefore, your source of strength and your source of happiness, your source of joy, source Allah ko. तो मेरी वो ऐसी कोई ऐसा पलटा खाया मैंने कि मैं फिर वो जो इश्क का रास्ता कहते हैं, मोहब्बत का रिश्ता कहते हैं, वो जो भी आप उसको कह लें, कि मैं फिर उसको बेस्ट फ्रेंड की तरह मैंने समझा. उसने मुझे जिस सिचुएशन से जैसे जैसे निकाला. आप जानते हैं, आप you've lived in West, I was in Dallas, going through 4-5 lawsuits simultaneously. So my divorce case, my custody case,
There was my bankruptcy case. My lawyers had sued me. All of that simultaneously without a lawyer representing me, because I had run out of money. I had to represent myself. And then for me to win all those cases, and I don't have any law degree, and nor do I know, khali paper leke judge ke samne chali jati thi har dafa, aur I would cry in the court, because I didn't know what to do. And the judge would literally be like this, ma'am, why don't you get a lawyer? I said, I can't get anybody pro bono because the opposing attorney scares him. I can't hire anybody because I don't have any money. And I keep showing up, Your Honor, because I want you to know I care. I care about the custody of my daughters. I just don't know what to do now. तो एक एक करके इतनी मुश्किल सिचुएशन, क्योंकि उस वक्त मुझे सिर्फ एक बस वो रस्सी पकड़ी हुई थी अल्लाह की, कि एक अगर ये मेरा रब है तो ये मेरी बच्चियों का भी रब है, और रब का मतलब है पालने वाला, तो फिर ये ही कुछ करेगा। मुझे नहीं पता मैंने क्या करना है। माई जॉब इज टू जस्ट शो अप, एंड आई विल शो अप एवरी डे। रेस्ट आई डोंट नो। वो एक एक करके उसने जिस तरह से ऐसा रास्ते खोले, ऐसे उसने मिरेकल्स, जो कि सिर्फ मैं जानती थी कि दीज आर मिरेकल्स बिकॉज आई न्यू हाउ डिफिकल्ट द सिचुएशन वाज। वहां से साहिल, जो मेरा उसके साथ एक याराना आप कह सकते हैं, इश्क कह सकते हैं, दोस्ती कह सकते हैं, उसको मैं अपना बेस्ट फ्रेंड कहती हूँ, कभी मैं सहेली कहती हूँ, बिकॉज अल्लाह हैज नो जेंडर एंड अल्लाह सेज यू कैन, जैसे मुझसे गुमान करोगे वैसा पाओगे। मुझे वो बस उसको मैंने ऐसे वो मेरे वो अल्लाह ताला भी, मैं सीन सोचती हूँ जब मैं 18 साल की उसको चैलेंज कर रही थी कि व्हाट यू कैंट मेक मी डू इज लव यू। उस वक्त अल्लाह ताला ने कहा होगा, हाँ बच्चू देखते हैं, चल आगे चल के देखते हैं कि तू फिर बाद में मेरे इश्क की कहानियां लोगों को सुनाएगी। एंड व्हाट आई फील माय रोल नाउ इज, साहिल, लोग रिचुअल्स में पढ़ के रब से इतने दूर हो गए हैं। रब की जो मोहब्बत है कि मुझे अब कोई भी, एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, एनी स्कॉलर, any Maulana, anybody, nobody can tell me that Allah doesn't love me. Nobody can tell me that. We have this concept कि हम गुनाहगार हैं, अल्लाह कहाँ प्यार करता होगा। अरे बाबा, गुनाहगार हो तो प्यार करता है, उसने तो बनाया ही गुनाहगार है। उसने कब कहा मैं नहीं प्यार करूंगा अगर गुनाहगार हूं, राइट? सो मुझे ये फील होता है कि इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्राइम्स दैट पीपल हैव बीन सेपरेटेड फ्रॉम रब। रब की मोहब्बत हम सबका हिस्सा, हक है, पैदाइशी हक। So I feel now my role is, I do other talks, I do other things also, but I feel my real role is that I can literally help people to connect with Allah Ta'ala in a way where, He's your best friend. मेरे courses में माशाल्लाह से साइकोलॉजिस्ट भी आई हैं और वो खवातीन भी आई हैं जो आलिमा की उनके पास डिग्री है, एंड दे फील दे वेरी कनेक्टेड टू गॉड, एंड आफ्टर टेकिंग द कोर्स दे से, क्योंकि मैं बताती हूँ लोगों को, भाई मैं स्कॉलर नहीं हूँ, मुझे बहुत कम पता है, लेकिन मैं आपको ये चीज सिखा सकती हूँ कि रब आपसे प्यार करता है और आपने रब से कैसे प्यार का रिश्ता जोड़ना है। सो दे ऑलवेज टेल मी आफ्टरवर्ड्स के starting out, we thought we had a very strong connection with Allah Ta'ala, but after this course, it is completely changed. We feel like He is our best friend, and He is. वो इतना रहीम, इतना प्यारा, इतना, क्या ज़र्फ है उसकी, क्या, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कि लोग ये कहें हाँ जी अल्लाह ताला बहुत प्यार करता है, फिर जो मर्जी दिल चाहे अब करते जाओ। No, that's not what I'm saying. But रब की मोहब्बत से हमारी मुसलमान उम्मत, मुझे लगता है, दूर हो गई है। सॉफ्टनेस नहीं रही हमारे अंदर। तो कुछ लंबा मेरा मोनोलॉग हो गया, सॉरी। No, I'm you took me to a lot of places actually. You said some certain statements which I wish more people can say, but that's how that's the kind of world we live in. ऐसा तो हो नहीं रहा कि लोग अल्लाह ताला के प्यार को सेंट्रल करें। मैं ना स्कूल्स में ना इस वक्त बहुत ज्यादा छोटे बच्चों को, मतलब स्कूल गोइंग किड्स के साथ मेरे ज्यादा प्रोग्रामिंग है, बिकॉज I became a little nihilistic after going through a lot of यूनिवर्सिटी के टूर्स है ना, इसके अंदर मुझे बहुत ज्यादा शॉक लगा था, क्योंकि
very high expectations. Because of YouTube, I'm telling you, internet, social media, कि इतना कुछ देखते हो तो अवेयरनेस की तुम्हारे कोई लेवल होने चाहिए ना. I mean, you guys are all over, you students की बात कर रहा हूँ. मैं समझ all over the internet, मगर कुछ भी नहीं पता तुम्हें. Like when I talk about the reality of this universe through the book that you claim is yours, कुरान की बात कर रहा हूँ मैं, और मैं कौन सा तुम्हें कह रहा हूँ कि कोई फतवा देने आया हूँ मैं. I'm trying to actually make you think. But I found out कि in my youth in Pakistan, 20s में भी देर हो चुकी हुई होती है. Because they're made to be too busy in things which are the fascination of, expired fascinations of some other culture, some other country, some other place, some other people. Yes, yeah. Would be expired? I mean, you guys are like so far behind. Behind. Yeah, exactly. You're way behind. Yeah. So I jumped right into the schools as much as I could. And some of the schools really embraced me. Literally, emotional intelligence, literally. This very word, I went into schools. कि हमने बच्चों को सोचना सिखाना है, बच्चों को फील करना सिखाना है कि भैया कैसे प्लेस करना है अपने आप को. When you're talking about values, what does that actually mean? When we talk about character, where does it actually show? And उसका फायदा क्या है आपको? And I started going into kids and started talking to the kids about the Sira, trying to create the right heroes. क्योंकि जो definition of heroes है ना, लड़के की, पाकिस्तान में लड़के की, वो इतनी irrelevant to his own value system है, irrelevant है कि वो उस हीरो से उस वैल्यू सिस्टम को आपस में कनेक्ट नहीं कर सक रहा. और पाकिस्तान की लड़की को कोई हीरो देते ही नहीं है हम. There is no one example in the texts of any curriculum that you're going to find a woman who is actually representing those values and the resilience to follow the to walk through the problem जो कि पाकिस्तान की लड़की को आ रही है असल में. और जिस लेवल की इस कल्चर में लड़की को प्रॉब्लम आती है, किसी और कल्चर में, खैर आई नो अ फ्यू व्हिच हैव वर्स, बट मोस्ट ऑफ द कंट्री वर्ल्ड डज नॉट गो थ्रू द काइंड ऑफ हॉस्टिलिटी ये पाकिस्तानी इंडियन लड़की को आती है. और उस लेवल की रेजिलियंस किसी भी एक कैरेक्टर में है ही नहीं, जो कि कैरेक्टर ही कोई नहीं है जो कि लड़कियों को एज अ वुमन ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 12 के बीच में एक भी लड़की नहीं मिलेगी आपको. यू कैन नॉट फाइंड वन ट्रू स्टोरी, वन फुल स्टोरी ऑफ एनी वन वुमन. यू पिक अ बुक फ्रॉम एनीवेयर, आप कहीं से भी कोई किताब उठा लें, आपको लड़की हीरो नहीं मिलेगी. तो लड़कियां क्या करती हैं फिर? लड़कियां फिर उस हीरो के डिपेंडेंसी के अंदर अपनी साइकोलॉजी को ट्यून करते हैं. इसको शाइनिंग आर्मर के इंतजार में बैठी होती हैं, राइट? द नाइट इन शाइनिंग आर्मर, बिकॉज दैट नाइट इज ऑलरेडी देयर इन द बुक्स दैट दे आर रीडिंग ना. They're reading it inside so it's not about the Cinderella cartoons or Peter Pans or wherever. They're not trying to be Tinkerbells of some Peter Pan. No. They have absolutely no choice. They are designed into believing कि हीरो का मतलब ही आदमी है. Okay, the concept of the heroine, the female character is a very subservient negative connotation का character है, because वो फिल्मों में मिलती है. पाकिस्तान कल्चर में लड़की जब हीरोइन होती है वो फिल्मों में होती है और वो ठीक औरत नहीं होती. ये हमारी साइकोलॉजी है. दिस इज समथिंग व्हिच आवर कल्चर गिव्स. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. तो I do. मैंने अभी रिसेंटली वीडियो बनाई थी. I just want to cut you off really quickly. Sorry about that. On Hazrat Nusayba bint Ka'b, and I was so impressed with her story. What a warrior. Now that's a hero. That's a strong lady. Who actually protected the life of the Prophet ﷺ in battle and then fought many battles. और फिर हाथ उनका कट गया था. उसके ऊपर बहुत कम मेरे व्यूज आए. ये जो बाकी टॉपिक्स हैं उस पे धड़ाधड़ आते हैं, बट वो वाला जो था presenting this figure of this really powerful sahabiya, इतने ज्यादा नहीं. Yeah, well, see, now that's the problem. Let me just solve that problem, because I want you to talk about Nusayba radiallahu anha a lot. Okay, she's in my top 3. Okay, she's in my top 3 the whole universe. Okay, Nusayba. Amazing. और लोगों को पता
आप सोचिए लोगों को पता ही नहीं है. Nobody knows Well, about that's how they're gonna know ना. आप बताएंगी तो तब पता चलेगा ना. मेरे बताने से तो नहीं लड़कियां सुनेंगी ना, because mostly boys listen to me. So you need to understand. Plus, if I tell a story about a girl is not going to relate to it. When a girl is going to tell a story about a girl, the audience, which is girl, is going to relate to. They're going to relate to it way deeper. Okay, they're going to internalize it. So, but I do my bits. Nuseba is probably the most quoted name, most well in the top 5 names that I quote everywhere I go, even to boys. But I'll tell you how to articulate पाकिस्तान की जो साइकोलॉजी है ना लड़की की, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. पाकिस्तान की साइकोलॉजी में जो वर्च्यू सिग्नलिंग है ना, यू नो व्हाट वर्च्यू सिग्नलिंग इज, के ऐसी चीज के अंदर से वर्च्यू निकाल लेने जो असल में विलेनिश हैं, यू नो, दे आर इवल कैरेक्टर्स, मगर उसको उसके अंदर से वर्च्यू सिग्नलिंग करते हैं हम. विक्टिमाइजेशन पाकिस्तान की लड़की को गिफ्ट में मिलती है कि ये यू नो व्हाट, सारे के सारे तुझे देख के रो रहे हैं तो तू कितनी बड़ी चीज है. यू नो, दिस इज अ गिफ्ट. दिस इज अ गिफ्ट वी आर गिविंग टू आवर डॉटर्स, कि तुझे देख के सारे लोग रो रहे हैं. सो दैट मेक्स यू दिस weirdly good character somehow, even though it is against the very science, very Islam and very common sense of anything. कि मुझे देख के सारे अगर रो रहे होंगे तो ये तो मैं तो कोई बहुत ही बुरे हादसे से गुजराऊंगा. या ऑफ कोर्स तभी तो रो रहे हैं, मगर तुझे सब देख के रो रहे तो कितना मजलूम है. somehow that makes me the hero of my movie. Somebody wrote that movie for me. ये फिल्म जो है ना, ये मुझे फ्लॉप करानी है बॉक्स ऑफिस पे. मैं आपको अभी I will go into it with you because this is so true and it annoys me so much because victimhood is glorified. You know, when I first started talking, which was quite accidental, I won't get into that right now, but even these talks that I started doing in Pakistan. So, you know, I had been doing my speaking in America to a subscriber list for almost 11 years, a decade. तो जब यहाँ पे मेरा वायरल हुआ तो मुझे किसी ने कहा तुमने अपना कभी नाम गूगल किया? If you put your name in Google search, Iram Saeed, one of the top searches that came up was Iram Saeed husband name, Iram Saeed marital status, Iram Saeed. They were so interested in finding out कि वो कौन बेचारा है या क्या है जो इसका खामिद है. Okay, so then I told them, if you're so interested in knowing, I'm actually not, you know, I'm divorced. तो उसके बाद the hate speech that started, the absolute abuse and गालियां and all of that, and I always wondered, and women औरतें आगे थी इसमें, and I would wonder कि यार एक तरफ कह रही हैं कि आपकी बातों से मदद हो रही है, दूसरी तरफ गालियां भी दे रही हैं, चक्कर क्या है? And I realized that if I was sobbing, crying, बेचारी औरत कि मैं 2 दफा मेरी तलाक तो हो गई है और मैं अब धक्के खा रही हूँ और मैं बड़ी मुश्किल से, और मैं लेकिन कुरान पढ़ा रही हूँ बच्चों को, और मैं ये मेरी जिंदगी बस मजलूम है, that was acceptable. But if I'm saying that no, I went through a very hard time, it was really difficult, Allah Ta'ala helped me, and alhamdulillah I live life on my own terms now, nobody tells me what to do and when to do, that is not acceptable. So ये जो है ना, आप जो बात कह रहे हैं, ये दिमाग में इतनी बिठा दी जाती है. अभी आप सेंटेंसेस देखिए, मरहूमा बड़ी ही साबिर थी, इतना सख्त खामिन था, कभी उफ नहीं की उसने. These are the kind of sentences that we hear as children, कि वो उसको ग्लोरीफाई करें. मरहूमा इतनी साबिर थी, यानी जन्नती थी, खामिन इतना सख्त था, कभी उफ नहीं की. खामिन जालिम था, मारता था, कभी उफ नहीं की. अच्छा, okay, this they categorize as sabr. Then they quote you hadithin where it says, you know, या ये कहेंगे inna Allah ma sabirin. Well, first let's redefine sabr. जब मैंने उसके ऊपर वीडियोस की तो बहुत से लोगों को गुस्सा चढ़ा कि भाई sabr is not this. Sabr first of all means to persevere. Sometimes sabr means you will stay और आप अल्लाह की मर्जी मान के उस चीज को बर्दाश्त करेंगे. Sometimes sabr is the opposite. आप जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे, अल्लाह पे भरोसा करके, you will fight for your rights or you will fight for the rights of someone else who's oppressed. True. Well, सब्र की जो डिग्रीज है ना, वो इसी तरीके से हैं कि पहले आप if you poke the bear,
right? Slap it in the face, and then if it hits you or mangles you or mauls you for that matter, तो आप फिर उसमें उस तकलीफ को बर्दाश्त करेंगे कि मैंने जो सही काम था वो किया है, उसकी रिपरकशंस के लिए तो फिर ज़ाहिर दुनिया का डिजाइन ही ऐसा है। फिरौन तो फिर सजा और बैन लगाएगा और फिरौन तो फिर आग में जलाएगा आपको, ठीक है। तो ये है असली। अब जो पाकिस्तान के कल्चर में सब्र की या किसी भी कल्चर में सब्र की डोमेस्टिकेटेड डेफिनेशंस आएंगी, तो उसमें फिर हमें वहीं पे वो वाला इस्लाम भी ढूंढना पड़ेगा। मैं आप हमेशा कहता हूँ खवातीन से, एंड आई एम गोना मेक श्योर योर व्यूअर्स आल्सो फाइंड आउट, कि अगर आपके घर पे मूसा नहीं है ना, आपका बेटा मूसा अलैहिस्सलाम है, तो फिरौन की बीवी बनना वर्चू नहीं है आपका फिर, ठीक है। वो समझ लें। ओके, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि या तो आपने there has to be a Islamic justification to use Islamic terminology. You cannot use a Pakistani justification for Islamic terminologies. Both sides. मैं दूसरे एंड पे मर्दों को भी कह रहा हूँ कि make sure you understand. देखिए, the vile nature of the man in our culture is allowed. बहुत बड़ा गुनाह है ये। Okay? उसका गुनाह सिर्फ आदमी को नहीं नुकसान पहुंचा रहा। You know, men are सिर्फ औरत को इस तरह नुकसान नहीं पहुंचा रहा कि आदमी अब्यूसिव हो जाता है, मगर उसका नुकसान ये होता है कि वो अपनी बेटियों को मलिशियस कर रहा होता है, और उसकी बेटियां जब किसी की बीवियां बनती हैं तो वो मलिशियस हथकंडे भी वही करे। इतना बड़ा नुकसान होता है दोनों एंड के। इट्स अ टू डबल एज सोर्ड एंड इट्स सच अ बिग प्रॉब्लम इफ आई सी एंड व्हेनेवर आई ट्राई टू बैलेंस एंड अ लॉट ऑफ men are keep telling me, you know what, you're too much of a feminist to know what the problem for men are, and I'm like, are you kidding me? most of the problems, मतलब एक खुद सोचें, 99% ऑफ ऑल बैटलफील्ड की आर्सेनल आपने एक आदमी को दी हुई है, 1% की आर्सेनल औरत को दी हुई है। यू कैन नॉट हैव एनी लेग टू स्टैंड ऑन व्हेन यू हैव टू पुट अ ब्लेम ऑन समवन। आप ओनरशिप लीडरशिप कवाम बनते हो तो ब्लेम भी लो ना। मैं मेक श्योर जब बेनिफिट स्ट्रक्चर की बारी आती है, नेचुरल बोर्न रिसीवर आदमी बन जाता है, कॉमन सेंस की बात है, मगर जब ब्लेम की बारी आती है तो आदमी हैज नो राइट टू ब्लेम द वुमन कि इसकी वजह से तलाक हो रही है या इसकी वजह से घर तबाह हो रहा है। डूड, यू आर इन द लीडरशिप। इमरान खान की वजह से पाकिस्तान तबाह हो रहा है या नवाज शरीफ की वजह से, ये किसी लोकल काउंसिलर की वजह से तबाह नहीं हो रहा। या तो ये इनकॉम्पिटेंट है या फिर ये कॉम्पिटेंट है। बिल्कुल ऐसे ही जब इस्लाम की बारी आती है, टेस्ट इस्लाम भी करने खातून के ऊपर, तो कवाम का स्टेटस तो फिर पूरी तरह ऑन भी करे ना फिर आदमी, ठीक है। अब रही बात other side of the story, make sure you understand, I'm going to tell you so that I can keep that fairness alive. I'm not trying to, you know, cite just cause जो है ना, cause, psychological cause, वो ये है कि जब भी आप एक अब्यूसिव रिलेशनशिप को देखेंगे तो बेसिक साइकोलॉजी है, इस्लाम भी उसी को ऑन करता है कि भैया जब डिटरेंट खुद सेंट्रल फिगर खुद डिटरेंट हो घर का, तो रेडिएशन सब में ही जाएंगी। तो उसके रिएक्शन में करती क्या है खवातीन, कि खवातीन अपनी बेटियों को ट्रेन करती हैं, खवातीन अपने आप को भी ट्रेन करती हैं कि हर बात पे रिएक्टिव रहें और अस्यूम द नेगेटिव ऑल द टाइम। और आप खुद सोचें ना, आपके साथ मैं बात कर रहा हूं और मैं हर वक्त स्केप्टिक बैठा हूं कि अभी इरम ने कोई ऐसी बात करनी है जो ताना मिलेगा मुझे, कोई ऐसी बात करनी है जो मुझे नीचे दिखाने वाली बात होगी, तो मैं आपसे क्या बात कर सकूंगा फिर? आई एम गोइंग टू बी रिएक्टिव। आई एम नॉट गोना हैव अ नेचुरल नॉर्मल ऑर्गेनिक कॉन्वर्सेशन विद यू। नथिंग, नो लर्निंग इज गोना हैपन। इफ एनीथिंग, एक दूसरे से दूर ही हो जाएंगे हम। So अगर the same would happen if I was in toxic femininity, because that also exists. If I thought you were, I personally believe कि हमारे कल्चर में toxic femininity is way more in terms of its horizontal spread than toxic masculinity. Horizontal spread ज्यादा है क्योंकि औरत का जो पाकिस्तान के डोमेस्टिक मेट्रोपॉलिटन हाउस होल्ड में जो होल्ड है ना, वो आदमी से ज्यादा है। I don't know why we don't recognize this. जितना मैंने वाइफ प्रोन हस्बैंड पाकिस्तान में देखा, गोरा नहीं अभी इतना, ठीक है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, पाकिस्तानी औरत का हैंडल है। अगर वो ये बात समझ ले कि इसको चैनल और हार्नेस कैसे करना था, हाउ टू डेवलप ए मोर ऑर्गेनिक रिलेशनशिप विद हर हस्बैंड रिगार्डलेस ऑफ
और बीइंग ऑब्लिवियस टू के इसकी तरबियत कैसी हुई है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, अभी बताता हूं कितनी नेगेटिव असम्पशन के साथ शादी होती है पाकिस्तान में। तो उसके बाद तो सारा फिर डेवस्टेशन की प्रोबेबिलिटी बढ़नी है। खवातीन का एक सेशन हो रहा था ना, इससे कि आपको सास के लिए क्या बताया जाता है घरों में। Like more than 800 women in Karachi, and they said कि सास is a natural born killer. सास is a killers. साथ की इसे यूनानिमस एग्रीमेंट, इक्का दुक्का भी होती तो मैं कहता यार चलो एक मजाक हो रहा है। नो नो, सास के बारे में एक नेगेटिव कॉनोटेशन है। सास के बारे में एक पहले से एक प्रेपरेशन किट मिलती है, शादी से कुछ 3-1 साल पहले से स्टार्ट हो जाती है। लड़के को देखने की बजाय लड़के की माँ को देखा जा रहा होता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो इस लेवल की डेप्थ की एक लड़की की ट्रेनिंग हुई होती है। सो आई सेड तो क्या लफ्ज है, एक ब्रांड बताएं सास का। जैसे चुड़ैल नाम है सास का, ब्रांड जो है ना चुड़ैल है। सो आई वाज लाइक ओके, तो फिर कॉमन सेंस की बात है ना, आपको पता है कि चुड़ैल है, तो चुड़ैल के बच्चे से शादी करोगी तो फिर अब्यूसिव ही निकलेगा ना वो। अगर पहले से ही पता है चुड़ैल का बच्चा है, फिर उससे क्या प्यार मोहब्बत के वादे। उस बंदे ने बेचारे ने तुमसे क्या प्यार करना है अगर तुमने पहले ही अस्यूम कर लिया चुड़ैल का बच्चा है। अब वो बेचारी इस लेवल के ऊपर ट्रेन हुई हुई है, खुद सोचिए। अब वो करता क्या है वो बंदा फिर, आई स्वेयर टू यू, आई एम टेलिंग यू दिस थ्रू अ लॉट ऑफ सैंपल, ओके, hundreds and hundreds of boys who just got married and hundreds of men who got divorced. इनका सैंपल है मेरे पास, because that's what I do. So I ask them a certain series of questions, not just so that I can keep growing my data set, no, because I want to solve the problem every single time. और वो मुझे पता क्या बताते हैं लड़के न्यूली गॉट मैरिड कि ये मेरी बीवी डिफेंसिव है। आदमी जो बता रहे होते हैं मेरी बीवी डिफेंसिव है, एंड आई लाइक हाउ डू यू गेट दोस सिम्टम्स कि बीवी डिफेंसिव है? हाउ डू यू नो दैट? बिकॉज शी ओनली मुझसे तब खुल के बात करती है जब पूरी बिल्डिंग में कोई और नहीं होता। Should you believe that? कि मेरे घर वाले कहीं गए हुए होते हैं, या फिर she feels unsafe with me if somebody else is in the house. ये बेसिक इंडिकेटर्स होते हैं साइकोलॉजी के, गौर से समझें। एंड पीपल हु आर लिविंग अलोन विद देयर वाइफ्स, वो किस बेस के ऊपर अपनी बीवी को इनऑर्गेनिक रिलेशनशिप को के सिम्टम्स बताते हैं कि शी इज ऑलवेज ट्राइंग टू, लाइक शी हैज अ लॉग बुक, शी इज राइटिंग स्टफ, शी डबल्स बैक ऑन द डेटा दैट आई गेव हर 3 years ago. शी इज ऑलवेज चेकिंग अप ऑन मी, शी इज ऑलवेज चेकिंग अप कि मुझे ना मेरा ऑडिट चल रहा है, हर वक्त मेरा ऑडिट चल रहा है। ये डिफेंस मैकेनिज्म ऑन है ना लड़की के, क्योंकि वो कभी भी यकीन नहीं करती कि, मतलब शी इज ऑलवेज अस्यूमिंग, बेचारी ट्रेनिंग ऐसी हुई है कि ये चोर है, लेट हिम प्रूव ऑल हिज लाइफ कि ये चोर नहीं है। वो बेचारा 50 साल भी प्रूव करता रहे और अचानक 50 साल में गलती करता है तो कहते हैं यहाँ देखा है तू चोर था। You start with assumption of guilt. Yeah. इसके पीछे there are so many things that are at work. I know. But I'm saying इसको चेंज करना आसान है। कॉज तो हमें पता है ना, बिकॉज ऑफ कोर्स एक इनहेरिटेड सिंड्रोम तो आता है ना माँ बाप दोनों की तरफ से। सो मुझे सिर्फ एक गुस्सा आदमी के ऊपर है कि पाकिस्तान में इसकी चाबी पता किधर है, मैं आपको बताता हूँ इसकी चाबी है। आई कैन सॉल्व दिस, आई मीन देयर इज अ फॉर्मूला फॉर दिस, बिकॉज वी नो द मैप नाउ। हमें पता है वायरस कहां से एंटर होता है और वायरस कहां से निकलता है। ओके, वी गेट दैट। इसकी चाबी असल में आदमी के पास है, औरत के पास नहीं है। That's why I blame the man. और उसका शोर नहीं है, याद रखिएगा। शादी के फौरन, मतलब शादी के कॉन्सेप्ट के ऊपर जो आदमी है ना, जो बेटी का बाप है, उसका जो रोल इल डिफाइन हुआ है ना, वो कॉज है हमारी शादी की डेवस्टेशन का। अगर ये बात कोई तरीके से समझ लेना जो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, तो पाकिस्तान का 30-40% मसला हल हो जाएगा, क्योंकि डोमेस्टिक डिस्टर्बेंस है। Father told before the girl is married or after the girl is married कि वो फादर अपनी ओनरशिप छोड़ देता है, अपनी बेटी की ओनरशिप छोड़ देता है पाकिस्तान में। जिस दिन पाकिस्तानी मर्द को पता चल जाए ना कि उसकी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तलाक याफ्ता बेटी को पालना बेहतरीन सदका, इससे ऊपर की एक्सपेंस नहीं तुम कर सकते। यू आर द टॉप ऑफ द फूड चेन अगर तुम ये एक्सपेंस कर रहे हो। इतनी ओनरशिप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। अब वो क्यों थी? क्योंकि लड़की की जो ओनरशिप की डिसमेंटल करता है ना शादी के फौरन बाद, ऐसे निकालता है जैसे कैंसर जिस्म से निकला है। ये है रियल प्रॉब्लम उस बेचारी लड़की का। इस वजह से वो डिफरेंट, इसलिए नहीं कि उसकी मलिशियस और अम्मी ने ट्रेन किया होता कि सास आई 2 नंबर। नो, दैट्स नॉट एज इफेक्टिव। उसका शौहर इतने काइंड हार्टेडनेस से, केयर से उसको ट्रीट कर सकता था, ट्रीट हर आउट ऑफ दिस लिटिल असम्पशन कि हर बंदा ही विलन होता है। मगर वो बेचारी जब सोचती है कि आदमी तो बिल्कुल ही मुबर्रा रहता है, यार मेरा सगा बाप
मुझे शादी के फौरन बाद ऐसे भागा है, ऐसे गायब हुआ है जैसे कि मैं कोई बीमारी थी। उसके बाद शी कैन नेवर ट्रस्ट एनी मैन। मैं बता रहा हूं वो डिफेंसिव ही रहेगी सारी उम्र। दैट्स नॉट साइकोलॉजिकली पॉसिबल कि वो बंदी ओन करे अपने शोहर को, बिकॉज शी थिंक्स कि आदमी तो हाई टेम्परेरी सी मखलूक, इसलिए वो क्या करती है, इमीडिएटली अपने बच्चे का बंद कर लेती है और वो हाईजैक किडनैप करती है अपने बच्चों को। शी स्टार्ट्स टू गिव न्यूट्रल एट बेस्ट एंड वेरी बैड इन नॉर्मल सिचुएशन में। अपने बच्चों को ना एक डोज देना शुरू कर देती है, बिकॉज शी इज ऑन अ सर्वाइवल मोड। शी नोज ये आदमी तो ओनरशिप नहीं लेगा। Women for the most part have gone into the survival mode so much that Muslim women are so dependent on the men. And I think part of what you were saying made so much sense to me. But also I think partly इस्लाम ने औरत को इतना डिपेंडेंट एक्चुअली मर्द पे किया नहीं था. शी वॉज अलाउड टू हैव हर ओन प्रॉपर्टी, शी वॉज अलाउड टू हैव ऑल दोज थिंग्स, एंड divorce was never considered to be the kind of taboo that it is today, right? अब तो ये हराम चीजों से क्या जना से भी ऊपर ले गए कि डिवोर्स नहीं करनी, बाकी आप जो मर्जी गुनाह कबीरा कर ले. पहले डिवोर्स क्वाइट नेचुरल कि लोगों में हो जाती है डिवोर्स, टू गुड पीपल कैन हैव डिवोर्स, ओके, एंड देन इधर वो इद्दत का टाइम पीरियड होता था, इधर शादी हो जाती थी, बेवा के साथ इद्दत का पीरियड खत्म हुआ, शादी हो जाती थी. पीपल, बिकॉज दे अंडरस्टूड इस्लाम is a religion which is very close to nature. Nature requires you to have a partner, right? That's how you can actually have a balanced, healthy life in physically, in your mental health, in your emotional health, so many ways. तो ये हम अपनी बहुत सी बेसिक से बहुत दूर चले गए हैं. हम गलत चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा अब जोर देते हैं, लोग क्या कहेंगे के ऊपर. दैट इज एक्चुअली आवर तौहीद, बाय द वे. लोग क्या कहेंगे, असल में हमारा ये है तौहीद का सारा कॉन्सेप्ट. और लोग क्या कहेंगे ना कि मैं लेट मी जस्ट गिव यू अ लिटिल, तमाम बच्चियों को, जो छोटी बच्चियां सुनेंगी आपके तवज्जुह से, लोग क्या कहेंगे इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू रिमेन विद यू regardless of whether you want to use it because it's at your disposal. या तो आप उसको पॉजिटिवली यूज करें या नेगेटिवली यूज करें. It could be a constructive pyramid for you as well, but most of all what we do is उसको पहाड़ बना के अपने सर पे तोड़ लेते हैं. So लोग क्या कहेंगे कि पीछे हमारी न्यूरो केमिस्ट्री डिजाइन हुई हुई है. याद रखिएगा, अगर लोग कुछ ना कहें ना हमारे बारे में और ऑब्लिवियस हो जाएं तो हम इंस्टेंटली नाइलिस्टिक होकर मर जाएंगे. याद रखिएगा. सो लोग जरूरी हैं कि लोग हमारे बारे में कुछ कह रहे हैं. ऑफ कोर्स यू एंड आई बोथ आर टॉकिंग टू ईच अदर बिकॉज हमारे बारे में बहुत सारे लोग बहुत कुछ कह रहे थे. You know what I'm saying? That's why we happen to be talking to each other, right? So लोग क्या कहेंगे is a very good asset as well if we know कि इसको हार्नेस करना कैसे होता है. अगर हमने उनको पर्पस बना लिया है तो फिर तो बहुत ही निचले लेवल का शैलो बोना बन जाएंगे और फिर आप हर बंदा, ये सारे लोग आपके सर के ऊपर से गुजर जाएंगे. या नहीं, फुटबॉल की भी कोई इज्जत होती है. फुटबॉल की बड़ी इज्जत होती है, उसकी वजह से तो फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतते हैं. फुटबॉल को डायरेक्ट किया जाता है, फुटबॉल को ऑन किया जाता है, फुटबॉल हमारे पास आता है तो हम खुश होते हैं. फुटबॉलर को बहुत बहुत वैल्यू पता है फुटबॉल की, यू नो. मगर ये जो बोने होते हैं ना, इनको कोई नहीं फिक्र करता. ये वो हैं जो कि इस्तेमाल के लिए टिश्यू पेपर्स होते हैं, यू नो. जस्ट कैरेक्टर के बोनों की बात करें ना, जो या कैरेक्टर ओनली बिकॉज नो वेल थॉट जिसकी साइकोलॉजी इंफीरियर हो जाती है तो वो कैरेक्टर भी उसका खत्म हो जाता है. याद रखिएगा, इस्लाम जो है ना, लड़कियों को बता दूं प्लीज, ये बात सवाम खवातीन और बच्चियां मेरी, स्पेशली लिटिल गर्ल्स हु आर 13, 14, 15, मेक श्योर यू अंडरस्टैंड. ये लड़कों को नहीं, मैं लड़कियों को कह रहा हूं. लड़के तो खुद ही इनहेरिट करेंगे इस सेशन को जो मैं अभी बोलने लगा हूं कि इस्लाम लो सेल्फ एस्टीम बंदे का दीन नहीं है. अगर आप लो सेल्फ एस्टीम है तो बुद्ध मत में चले जाएं, आपको एक कुटिया और एक दरख्त दे देंगे, नीचे बैठे. दुनिया में किसी को कोई नहीं फर्क पड़ेगा, ना आपको ना उसको. आप आराम से अपनी और अल्लाह के इरफान की बातें करके अपने आप को खुश करें. इस्लाम हाई सेल्फ एस्टीम इंसान के लिए डिजाइन हुआ है. कुरान पाक की जो आयतें हैं, ये याद रखिएगा. मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट बता रहा हूँ, एज अ न्यूरोलॉजिस्ट बता रहा हूँ, एज अ बायोलॉजिस्ट बता रहा हूँ, एज अ बिहेवियरल साइंटिस्ट बता रहा हूँ, एज अ मैन बता रहा हूँ, एज अ मुस्लिम बता रहा हूँ, एज अ थिंकर बता रहा हूँ, एज ए रेगुलर प्लेनेट अर्थ का बाशिंदा बता रहा हूं कि जब मैं तमाम चीजों को इकट्ठे देखता हूं तो पता चलता है कि जो बिगेस्ट पॉसिबल एसेट किसी को मैनुअल मिलना था ना, तो वो मैनुअल हर बंदे के लिए नहीं था. मैनुअल उस बंदे के लिए था कि जिसकी सेल्फ एस्टीम इस लेवल पे डेवलप हो जाए कि वो कुछ कर सके इस बारे में. ओके,
बिल्कुल इसी तरह ये समझ लें कि मेडिकल साइंस जो है, मेडिकल साइंस किसी वजह से, या इंजीनियरिंग की डिग्री किसी एक खास बंदे को दी जाती है कि उसने सबूत दिया हुआ कि उसका कोई आईक्यू है, कोई टेस्ट दिए हुए उसने, कोई क्लियर हो गया है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से इस्लाम भी, कुरान पाक भी डिमांड कर रहा है कि अपनी सेल्फ एस्टीम बढ़ा, तब तुझे कुरान पाक एब्जॉर्ब होगा, वरना एक कुरान पाक के कोई भी आयत तो अप्लाई नहीं कर सकेगा, तो क्या होगा, कॉग्निटिव डिसोनेंस का शिकार हो जाएगा। तो वरना अमल बिल मारूफ। मैंने अभी सेमिनार किया था साहिल, खुदी के सिर्रे निहा ला इलाहा इल्लल्लाह। ओ भाई देखो, वो शायर मशरिक जो था वो कौन सी खुदी की बातें करता था, कौन सी सिर्रे निहा है जिसके बाद आपको ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझ में आ जाता है। फिर वही खुदी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले, और भुला दिया हमने ये सब कुछ, ये इसको जानने की कोशिश ही नहीं की, भूलना तो इकबाल भी तो लड़कों के लिए ना, मैं इसलिए तो कह रहा हूँ लड़कियों को पता चलना चाहिए। अरे मैं तो लड़की होके आई कनेक्टेड विद इकबाल, देखिए। I hope they get it. I did. That's what I'm saying to you. It was when and this is one thing I teach my students. Stop waiting for the knight in shining armor. You are your own knight in shining armor. You are. And once you realize that, this is what I'm saying to the women, not to the men. I say that to the women. You are your own knight in shining armor. Once you are connected to the King of Kings, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारी बैक पे है। I agree with you, but I have a totally different perspective on this. When I tell girls about the knight in shining armor, I use this analogy as well. मैं साफ बताता हूँ लड़कियों को कि अगर आप लो सेल्फ एस्टीम की मखलूक है ना, तो एक आम सा कमी कमीन भी एक क्या उसे कहते हैं, लल्लू पंजू आपके लिए नाइट इन शाइनिंग आर्मर ही है। वो खुदारा उसको माने, फिर वो आपका नाइट इन शाइनिंग आर्मर है, बिकॉज वो आपसे ऊपर की चीज है। आप अगर अपनी सेल्फ एस्टीम बढ़ाएंगी तो असली क्वालिफिकेशन मिलेगी नाइट्स इन शाइनिंग आर्मर की। मुझे भी जरूरत है, आपको भी जरूरत है, हर एक को जरूरत है नाइट इन शाइनिंग आर्मर की। ओके, यू नीड टू नो, ये एक लाइफ का, इस कुर्रे अर्ज का इंतजाम है कि हमें इस तरह के एक कैरेक्टर चाहिए होता है अपनी फैमिली में, जो फैमिली की वो वाले मामलात की भागदौड़ संभाले जो मैं नहीं संभाल सकती ये सकता। ओके गार, मैं तो अपने बच्चों को ममता नहीं दे सकता, तो मुझे अपनी बीवी में नाइट इन शाइनिंग आर्मर इस चीज के लिए चाहिए होता है। पर आई नीड टू क्वालिफाई कि मैं वाकई में डज शी क्वालिफाई फॉर दिस, आई नीड टू हैव दैट मेजर एंड इंस्ट्रूमेंट। और खुदारा मेरे वीडियोस देखें, मैं बार बार बता रहा हूं, लड़कों को स्पेशली बोलता हूं कि डरो उस दिन से जिस दिन पाकिस्तानी औरत ने इस्लाम पे तुम्हें क्वालिफाई कर लिया। ओके, क्योंकि अल्लाह ने वो इजाजतें दी हुई है ना लड़की को, वो नखरा उठाया हुआ इस्लाम ने लड़की का। आदमियों को पता ही नहीं है, अपनी बेटियों को नहीं बताते हुए बेवकूफ, क्योंकि पता ही नहीं है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, अपनी सेल्फ एस्टीम बढ़ाएं, और पाकिस्तानी क्या, दुनिया के हर इंसान को, दुनिया के हर फ्यूचर को और पास्ट इंसान को उस मेजरमेंट के ऊपर, उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर मेजर कर रहे हैं, इस काबिल हों कि आपको मेजर पता चले। मैं ना एक सेशन में था यूरोप में, और इकबालियात के प्रोफेसर साहब बैठे हुए थे और लेक्चर दे जा रहे थे, और मुझे कहते हैं, साहिल साहब आप तो शायर के बेटे, शायर घराने, आपका शायरी आपके खून में, आपको ये समझ आ जाएगी कि, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स लफ्ज है ना खुदी, इकबाल का खुदी जो है ना, ये एक आम बंदे के लिए है नहीं, ये समझ नहीं आ सकता उसका मतलब था। एंड आई सेड, ये आप जैसे बाबा जिन्होंने भरवाया कौन को, अगर इकबाल ने खुदी के कॉन्सेप्ट को इतना कॉम्प्लिकेटेड रॉकेट साइंस बना दिया, तो फिर मुसलमान तो डिस्क्वालीफाई कर दिए थे उसने। असल में खुद ही सेल्फ एस्टीम को कह रहा है इकबाल कि अपनी सेल्फ एस्टीम बढ़ा के कुरान के करीब पहुंच जा तू। कुरान ऐसे देख रहा है कि इस लेवल पे कि इंसान ऊपर पहुंचे और कुरान उस तक कुरान उसके अंदर समा जाए। अब हम करते क्या हैं, हम फॉर एग्जाम्पल इधर मैं आपको बताता हूँ, आपको एक लॉ की बुक देता हूँ, लॉ की लिटरली इंस्ट्रक्शंस होंगी उसके अंदर, और आपको कहता हूँ लड़कियों के साथ एक लेक्चर करें जाके, तो आप किस टोन में लेक्चर करेंगी? वो सोचें जरा, किस साइकोलॉजी से वो लेक्चर देंगी? वो एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल की बुक है। आप कभी भी प्लीडिंग साइकोलॉजी से नहीं दे सकती वो लेक्चर। आप कभी बेग नहीं करेंगे कि यार ये लॉ मान लो, ये बात मान लो, क्योंकि ये एक अथॉरिटी अब मुझे समझ नहीं आ रही है कहां से हम बिसीच हो गए हैं और जमीन पे लेटे हुए रेंगते हुए कीड़े बन के कुरान पाक के अंदर से अपने आप को ढूंढ रहे हैं। कुरान पाक अशरफुल मखलूकात की किताब है,
आम इंसान की किताब नहीं है, याद रखिएगा. यू नीड टू बी दैट ऑन दैट अथॉरिटी वेयर यू कैन एक्चुअली डिक्टेट कि मियां तू मेरा श्योर होगा, मगर अल्लाह का तू गुलाम है, ये तू अल्लाह का कानून तोड़ रहा है इधर, मैं तेरे बॉस की शिकायत करूंगी तेरी, अभी तू बचने वाला नहीं है, और मुझे तेरे बॉस ने इजाजत दी हुई है कि तेरी तो अगर शक्ल भी ना पसंद आए तो मैं खुला ले सकती हूं, तुझे तो मैं माफ ही नहीं कर सकती, तू मेरे से डर के अल्लाह के कानून के ताबे बनाया गया, तुझे अल्लाह ने मेरा कवाम बनाया, मैंने या तूने, तेरे डैडी है, मेरे डैडी ने नहीं बनाया. ये अथॉरिटी जिस दिन खातून को आएगी उस दिन पाकिस्तानी लड़के का कैरेक्टर बिल्ड होगा. अभी तो उसको पता है, रिश्ते के लिए जाता है तो ऐसे समझते हैं जैसे कि सोने की कान है. लड़कियां अपनी सेल्फ एस्टीम खुद जमीन पे फेंक के बैठी हुई होती. Why on earth is this an opportunity to get married if you have a son, if you're a man, if you had a boy? Why is this such a good thing? मुझे पता क्यों? क्योंकि लड़कियां अपने स्केल्स तोड़ चुकी हैं. लड़कियों का कोई स्केल नहीं. कोई भी लड़का काफी है कि लड़का है, कोई भी लड़का इसलिए काफी है कि लड़का है. आप लड़कियां जब तक क्वालिफायर्स नहीं सेट करेंगी तब तक लड़के क्वालिफायर्स में पूरा नहीं उतरेंगे. उनका कसूर नहीं है, याद रखिएगा भाई. जब मुझे कोई अंपायर रोकेगा ही नहीं कि सफेद कपड़े पहने काले कपड़े पहने, तो मैं बैट और बॉल पकड़ के विकेट पे खड़ा हो जाऊंगा. अंपायर पता है मुझे. थोड़ा सा मैं आपसे इसमें डिसएग्री इसलिए करूंगी साहिल, कि मुझे बहुत से आई वाज सरप्राइज, बहुत से लड़कों के मैसेजेस भी आए, उनसे बातचीत भी हुई. लड़कियों ने, हमारी आजकल की लड़कियों ने क्वालिफायर्स कुछ सेट किए हुए हैं, बट वो बड़े गलत क्वालिफायर सेट किए हुए. फॉर एग्जाम्पल, पैसा कितना है, और पैसा इज नंबर वन. उसके बाद वो उसकी लुक्स पे जाती हैं. और मैं आपको इस पे एज अ साइकोलॉजिस्ट आई वुड लाइक यू टू कमेंट ऑन दिस, बिकॉज मुझे कभी कभी लगता है जिस तरह हमारे माँ बाप कहा करते थे, ये आजकल की नई नस्ल को क्या हो गया. मैं अब ये बातें करती हूँ, आई गेस बुढ़ी हो गई हूँ, तो मुझे अब ये लगता है ये नई नस्ल को क्या हो गया. अ ह्यूमन मेल बॉडी, it runs on testosterone. It's built in a certain way. अब जो लड़के हैं वो लिटरली अपनी ज़ेबाइश और सजने और संवरने के ऊपर अपनी बेगम से ज्यादा टाइम सर्व करते हैं. Like they actually spend more time in making sure कि वो जो लुक है आजकल की, and the coolness factor and all of that, they are so into this sajna and savarna, which is a very female thing to do. Now, what is happening? We are emasculating the men, and these are the standards that we want men to be on. And then, of course, now he's your husband. He's not going to be a strong man. That's not who you chose. You chose basically a pretty effeminate kind of a guy who is, whenever there is hardship, where typically a man who's running, on his natural male hormones, उसकी नेचर में है कि वो फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ा हो जाएगा. ये उसकी नेचर में है, बट आपने नेचर के साथ पंगा कर लिया. In America, they have if you go to the department stores, तो वहां पे अब मेल सेक्शन में they have the dad bod t-shirts now, which is a bigger belly and bigger chest, because they're saying that because of the hormones, वहां पे तो दूध में, पानी में, हर चीज में hormones डले हुए हैं. But men are now producing more female hormones than male hormones, so their body shape is changing. And so what do? They actually start making clothes to fit that body shape. But ये हमारी psychology में अब हमारे अंदर भी आ रहा है. There were certain activities that men were supposed to do, and there were certain activities they were not supposed to do. ये जो सारी कहानी कूलनेस के चक्कर में, और इसमें आई थिंक बॉलीवुड ने बेड़ा गर्क किया है सब लड़कों का. I mean, I hate to even mention it, but men spending so much time on getting their bodies waxed. They go to the gym so they can build a certain type of body, and then take their shirt off and show. It's like, what in the world is going on? मर्द, अभी तो हम औरतें अपनी ऑब्जेक्टिफिकेशन पे रो रही हैं कि हमें ऑब्जेक्टिफाई करना बंद करो. मर्द खुशी खुशी जाके ऑब्जेक्टिफाई होना शुरू हो गए हैं. हमें ऑब्जेक्टिफाई करो, हम होना चाहते हैं. लाइक व्हाट इन द वर्ल्ड इज हैपनिंग? पूरी की पूरी चीज लगता है उलट गई हुई है सब कुछ. पहला मसला सॉल्व किया और दूसरा मसला आके खड़ा हो गया. Yeah, well, it's not
I know. I mean, I've been contesting this case के असल में जो आपने कहा ना शुरू में कि the true sense of feminist movement जो थी ना वो तो छोड़ चुकी हैं लड़कियां और political हो चुकी है बात. अब एक perverted किस्म की feminist definition चल रही है दुनिया में. तो उससे हुआ ये है कि पूरी दुनिया में especially in the West the testosterone rates have dropped drastically, literally in a matter of 2 decades. You can see कितना फर्क पड़ गया है, लड़का कितना निस्वानी हो गया है और उससे नुकसान वही होगा, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर टूट जाएगा हमारा. बिल्कुल ठीक है. यू नीड दैट मैन फिगर टू परफॉर्म लाइक अ मैन. यू राइट अबाउट दिस. एंड इफ ही इज ट्राइंग टू परफॉर्म फॉर द अप्रूवल ऑफ ए वुमन देन ही इज गोइंग टू बी अ लॉट मोर he's going to carry a lot more feminine mystique rather than that masculine mystique. Okay. And उससे होता क्या है कि आप से मैंने पहली दफा सुना आपसे, आई होप कि इतना जल्दी ये वायरस ना फैलाओ कि लड़के वैक्सीन कराएं. दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एवर हर्ड अबाउट दिस. This is everywhere. Sorry, this is everywhere. Sorry to disappoint. Okay, well, I'm hanging out in different circles, alhamdulillah. But the question is, you need to find out कि आपके जो see, it starts from the house. If a woman, the mother, is going to make a conscious decision कि मेरा बेटा जो है ना ये एक वो वाली फिगर बनेगा, वो कैरेक्टर बनेगा, वो वाला एक अथॉरिटी बनेगा. ही इज गोइंग टू हैव दैट होल स्पेक्ट्रम ऑफ ऑल द इमोशंस रादर देन जस्ट वन. वो कॉन्शियस डिसीजन नहीं लेगी तब तक उसका बच्चा फिर वही बनेगा जो क्लास फेलोज बनेंगे या यूट्यूब दिखाएगी या फिर कोई फिल्म दिखाएगी. अदरवाइज समवन इज गोइंग टू हाईजैक और किडनैप योर चाइल्ड एंड समवन इज गोइंग टू लिटरली अडॉप्ट योर चाइल्ड. तो स्टार्ट तो ये कहानी उसी लड़की से ही होती है जिसका बच्चा हमने जिसके बारे में अभी आपने बात किया. दैट्स द मदर. But you need to understand, पाकिस्तान के कल्चर को आइडेंटिफाइबली डिफरेंट मार्कर्स मिले हुए हैं पाकिस्तान इंडिया दोनों के, दुनिया के बाकी के कल्चर से, कि पाकिस्तान का कल्चर कभी भी वो अथॉरिटी लड़की को नहीं देता. पाकिस्तान इस्लाम देता है, पाकिस्तान का कल्चर नहीं देता. तो लड़की क्या कर रही है, लड़की वेस्टर्न डेफिनेशन से अथॉरिटी लेने की कोशिश कर रही है बिकॉज वेस्ट में मिल रही है उसको. वो अलग बात है कि फिलोसॉफिकली करप्ट मार्कर्स हैं उसके अंदर बहुत बड़े. एंड आई थिंक गर्ल्स शुड नो अबाउट दिस एंड I'm as much of a feminist as anybody else, but don't chase blindly the definitions of feminism right now going around the world. वो तो इतनी बड़ी परवर्जन है कि वो लड़की को प्योर ऑब्जेक्टिफिकेशन के अंदर ये सारी फेमिनिस्टिक मूवमेंट करवा रहे हैं लिटरली. सेकेंडली दे आर ट्राइंग टू पुश, सेकेंडली वो पुश कर रहे हैं लिटरली. इतनी आयरनी है, जगह ऑक्सीमोरॉन कितना बड़ा है कि दे आर फोर्सिंग द गर्ल्स टू गो इनटू स्टेम फील्ड्स एंड टेलिंग देम दे हैव देयर ओन लिबर्टी टू चूज. यू आर द वन who's forcing the girls. If you want to give them the liberty, let them choose themselves. So it's an enticement going on which is on the other under the label of liberty and freedom. तो होता क्या है फिर, होता यह है कि फिर 30 से 50 साल लग जाते हैं नेचुरल हार्मोनल रिएक्शंस को. फिर जेंडर अपनी आइडेंटिटी खुद ही फिर अपनी जगह पे प्लेस करता है. जैसे अभी जितना मर्जी ये कर लें, वुमन स्टक इन अ मैन्स बॉडी, 50 साल के अंदर सारी विमेन विल गो बैक इनटू द विमेन्स बॉडी एंड मेन विल गो बैक इनटू द मेन्स बॉडी. मैंने शुरू में कह दिया था, आई थैंक गॉड आई वाज नॉट बोर्न इन दीज टाइम्स बिकॉज़ आई लव बीइंग अ वुमन. आई लव बीइंग अ वुमन. वो मेरा फेज थोड़ी देर बाद खत्म हुआ, मैं नॉर्मल हो गई. आई लव बीइंग अ वुमन एंड व्हाट यू सेड आई स्ट्रांगली फील. आपने नखरे का लफ्ज इस्तेमाल किया विच आई लाइक इवन बेटर. मैंने एक वीडियो बनाई थी कि अल्लाह हैज अ स्पेशल, आई फील अल्लाह हैज अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर वुमेन, और उसके ऊपर बहुत सी हेट स्पीच आई थी. आपने नखरा का है, आई लाइक दैट इवन बेटर कि इस्लाम तो नखरा उठाता है औरत का. इस्लाम ने बहुत लेवरेज दी है. मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास एक उस्ताद ने ना एक मेजरमेंट बताई हुई है आदमी को क्या क्या लिबर्टी मिली हुई है, औरत को क्या मिली है, और हमारे पास तो 20-30% भी नहीं है लिटरली इनसाइड द ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑफ इस्लाम. तो लड़कियों का इसमें पढ़ना ही नहीं है ना. वो मौलवी साहब लोकल वाले मस्जिद के मौलवी साहब के किसी इन्फ्लुएंस ने जिसने निकाह पढ़ा दिया, उसके इन्फ्लुएंस में आके उन्होंने सुन ली कोई डेफिनेशन या जनरलाइज्ड डेफिनेशन देख ली. इस्लाम पढ़ेंगी तो आपको पता चलेगा कि वो आर्कीटाइप ही कुछ और है. जो इस्लाम की आर्कीटाइप है ना औरत की, वो, और पाकिस्तान के अंदर जो इस्लामिक आर्कीटाइप है वो कुछ और ही है. सो मगर मैं फिर बता दूं,
जितनी सख्ती अल्लाह ने कहा था ना औरत को करने के लिए, हमने औरत पे कर दी। औरत इतनी डरपोक हो गई हुई है, मुसलमान लड़की स्पेशली व्हिच हैज सम सेंस ऑफ रिलीजन, वो इतनी डर गई हुई है कि आदमी को जैसे कोई एक्स्ट्रा टिकट मिला हुआ है जन्नत का, इवन दो आपकी वजह से वो भी दोज़ख में जाएगा, आप भी जाएंगे, मैं बता रहा हूं, बिकॉज आपने अपने जो है ना जो क्वालिफिकेशन, आपके जो टेस्टिंग मैकेनिज्म्स हैं वो बिल्कुल फॉल्टी हैं, बल्कि है ही नहीं, फॉल्टी हो गए में। सो अनलेस यू हैव दैट स्ट्रिक्ट टेस्टिंग मैकेनिज्म कि भैया बंदे को बंदा क्वालिफाई कैसे करते हैं, एक मुसलमान को क्वालिफाई करने की अहलियत रखें अपने पास। आदमी जितना मर्जी पाकिस्तान के कल्चर में नुकसान हो रहे हो, फायदा एक है कि वो ही इज too much, he's drooling for women. Okay, so in other words, he's directed towards you and you are the one who has the power to disqualify or qualify him, but yes, you're given it back to the man. And उसके बाद क्या होता है, अगर 4 लड़कियां बैठ के ये कर रही हो कि किसके रिश्ते ज्यादा आते हैं, तो जाहिर है आपने तबाह कर दी है, आपकी गेम ही, आपके स्टैंडर्ड ही गलत थे, आपके स्केल्स ही और थे। पूरा माइंडसेट चेंज होने की जरूरत है, लड़कों का भी लड़कियों का भी। I've been talking about it. I attended some weddings in Pakistan since I've been here. I was shocked. They were Bollywood productions and so much money being spent. And अभी क्योंकि अगर 8-10 फंक्शंस है ना, तो 5वें 6ठे फंक्शन तक झगड़े शुरू हो जाते हैं। इनवेरियबली यही होता है ना, जब आप इतनी ग्रैंड प्रोडक्शंस करें, कुछ ना कुछ तो गलत होगा। and the bride typically thinks she's the heroine of a Bollywood movie and everything should be perfect, and when it's not, तो लड़के लड़की में झगड़े शादी से पहले ही शुरू हो गए। और मैं ये कहती हूँ कि लोग सोचते क्यों नहीं है कि आपने करोड़ों रुपया खर्च कर दिया है, and the boy and girl are already fighting. You did not empower them enough with education, with knowledge, with the tools to actually live a married life, because ये जो honeymoon story है बॉलीवुड की, इसने तो हो जाना है 2 दिन में खत्म। Then real life is going to start. अल्लाह ताला कहते हैं कि मैरिज जो है, this is a source of sakina, the highest level of sukoon you can have on planet earth. शादियां देखें तो 90% कहते हैं शादी अजाब है, एक अजाब है और इसमें बस हम जी घसीट रहे हैं, जी रहे हैं। कुछ लोगों ने सोल्यूशन निकाली भी है, अफेयर्स, वो किसी और दिन हम बात करेंगे। इट इज एन एपिडेमिक ऑफ अफेयर्स। आई वाज शॉक्ड। आई हैव नेवर इन माय 30 years in USA seen what I have seen in, गुनाहगार आंखों ने जो चंद इधर सालों में 2 सालों में देख लिया है। इट इज शॉकिंग। देयर इज एन एपिडेमिक ऑफ अफेयर्स, बोथ मेन एंड वुमेन। उन्होंने सोल्यूशन ये निकाल लिया कि शादी तो चलानी है क्योंकि लोगों को दिखाना है हम शादीशुदा है, आगे फिर ये साइड पे हम जो मर्जी करते रहे। दिस इज हाउ वी कोप, दिस इज कोपिंग मैकेनिज्म। तो साहिल, अब क्या किया जाए? लाइक, कैन यू थिंक ऑफ अ वे? व्हाट आई थिंक इज, व्हाट इफ देयर वाज लाइक, आप उधर देखें बाहर कैथोलिक में, रिलीजन में आप अगर शादी करने लगे तो यू हैव टू गो टू द प्रीस्ट एंड दे गिव यू दीज प्री मैरिटल क्लासेस एंड यू हैव टू टेक देम एंड देन ओनली यू कैन गेट मैरिड। कुछ इस तरह की मे बी चीज हो कि यंग कपल्स शुड बी एम्पावर्ड थ्रू सम कोचिंग, सम कोर्सेज, कि भाई आप करने क्या जा रहे हैं। लड़कियों को सिखाया जाए कि बेटा आपको ये राइट है, आप निकाहनामे में ये चीजें आपने नहीं चाहती ना अपने खाविंद की दूसरी शादी, लिखवा दें इसके अंदर, बजाय इसके कि उसके ऊपर आप हर वक्त शक करती रहे आप। और अगर शक करेंगी तो अभी से अगर शक की बुनियाद कोई पड़ी हुई है तो why the heck are you getting married? Most girls have this notion, Sahil, my love will change him, I will be able to change him. अब भाई नहीं, कोई किसी को, instead of trying to change the ending, why not change the beginning? वही जो आप बात कर रहे हैं, क्वालिफायर्स को पहले समझें। क्वालिफायर्स क्या होने चाहिए, लड़कों के लिए क्या होने चाहिए, लड़कियों के लिए क्या होने चाहिए। मुझे बहुत से लड़के ये मैसेज करते हैं, मैं जब चूंकि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं या मेरी कमाई इतनी नहीं, तो जो अच्छे रिश्ते हैं वो मुझे रिफ्यूज कर देते हैं। तो मैंने कहा बेटा आप भी तो वो अपनी मार्केट वैल्यू सेट करिए बेस्ड ऑन व्हाट शी फील्स इज हर मार्केट वैल्यू। गोरा रंग है, खूबसूरत है, जो भी है, तो आप फिर जाके उन लड़कियों से शादी क्यों नहीं करते जिनको तलाक हो गई भी है, अच्छी लड़कियां हैं, मे बी किसी की मंगनी टूट गई, किसी का निकाह टूट गया, उनसे जाके शादी कर ले। आप क्यों इतने दुखी होके बैठे हैं कि कोई मुझसे शादी नहीं करती? There is so much work that needs to be done, but there's got to be a starting point somewhere. What do you suggest?
I think that starting point is Islam. I'm telling you this right now. Unless I agree with you, it's Islam, but we are so far from Islam, Sahil. I don't see scholars doing this. Scholars आपस में बस एक दूसरे को मसलक को तबाह बर्बाद करने के लिए लेक्चर्स दे रहे होते हैं. नहीं, ये तो एक देखें, एक चीज जो है ना स्कॉलर्स की जो कि जरूरी है आपको पता होनी चाहिए, शादी के ऊपर सबसे ज्यादा लेक्चर होते हैं पाकिस्तान में मस्जिदों में. That is, मेरी तो कंटेंशन ही है कि निकलो इन 2 रुपए की बातों से और जाओ बड़ी दुनिया में बड़े मसाइल को हल करो. ये तो पाकिस्तान में एक ही तो PhD कराई जा रही है कि शादी के अंदर क्या मसाइल होते हैं, तो शादी कैसे करते हैं. I'm just talking about the regular religious sermons, but I need you to understand something. ये जो okay, there's so much that you've actually packed into this whole I tend to do that. I need to parse this and find out के cause कैसे पकड़ी जाए. मगर ये मैं फिर बता दूं, अगर लड़की का स्टैचर इस काबिल नहीं बनाया गया ना, लड़की ने खुद 50% काम खुद करना होता है, लड़के ने भी 12-13 साल के बाद आप अपने जिम्मेदार खुद हैं. तो अगर आपकी माँ या आपके बाप ने आपका स्टैचर उस बेस के ऊपर इरेक्ट नहीं किया, you're not grounded strong enough to stand tall and to know what the duties of a husband are as well as the duties of a man, a woman, तो फिर आप शादी के काबिल नहीं हैं. Your biology does not qualify for you for marriage. Your sociology does. ये बात गौर से समझें. Your psychology does. और पाकिस्तान में इस लेवल की साइकोलॉजी है कि मतलब बच्ची को भी और बच्चे को भी 30 साल तक बच्चा ही समझा जाता है, क्योंकि उसके अब्बू अभी हयात है तो उसी जॉइंट फैमिली में रह रहा है. Psychology doesn't qualify, but the biology does, right? Because you said biology does not qualify for marriage. The man's psychology is the prime marker in Islamic qualification of marriage. कि तू साइकोलॉजिकली इस काबिल हुआ भी है कि तू जिम्मा ले. कुल्लू राई उन मसूला, तेरे से ही तो सवाल होने सारे. आप क्या बायोलॉजी थोड़ी, वो तो 13वें साल में बायोलॉजी में क्वालिफाई कर गया था. देयर इज नो वे. यू नीड टू अंडरस्टैंड कितनी बड़ी आप लड़कियों को बताएंगी कि भाई ये क्वालिफिकेशन है. अगर वो साइकोलॉजिकली, अगर एक मैन चाइल्ड अभी तक बायोलॉजिकली मैन, साइकोलॉजिकली चाइल्ड, तो उस बेचारे के साथ क्यों जाती, उस बच्ची के साथ क्यों जाती कर रही हैं आप अपनी बेटी के साथ? वो बंदा अभी इस काबिल ही नहीं हुआ हुआ कि वो मेजर डिसीजन ले सके. वो तो माइनर डिसीजन भी अम्मी से अब्बू से पूछ के ले रहा है, बिकॉज वो उनके खर्चे पे रह रहा है. वो क्या so it's a big problem कि आप मतलब when a girl does not know कि एक आदमी की जो का स्टैचर है उसके मेजरमेंट्स क्या हैं. लड़की का स्टैचर जो है ना, वो भी लड़कों को बहुत अच्छी तरह पता होता है, बाय द वे, ठीक है, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग ही इस बात होती है कि लड़की का स्टैचर को क्वालिफाई कैसे करते हैं. बड़े शाज़ो नादिर होते हैं जो बेचारे सिर्फ और सिर्फ लुक्स देखते हैं और फिर तबाह हो जाते हैं. बहुत कम होते हैं ऐसे. मगर ज्यादातर लड़कों को पता होता है कि यार, यू नो व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी द मदर ऑफ माय चाइल्ड, ऑफ माय चिल्ड्रन, एंड शी इज गोइंग टू, डज शी फिट द बिल इन माय फैमिली. ये बेसिक क्वालिफायर एक सबकॉन्शियस सेंसर होता है हर आदमी का. वो कभी नहीं देखता कि बहुत प्यारी है, मेरे अब्बू को भी बहुत अच्छी लगेगी, ऐसे नहीं होता. ही ऑल्सो लुक्स एट कि यार ये मेरी फैमिली में किस तरीके से, ही लुक्स फॉर ऑल ऑफ दोज साइंस. नाउ मैं आपको फिर बता दूं, जब तक लड़की क्वालिफायर अपने हाथ में रखेगी, शादियां सही हुआ करेंगी. लड़कों ने रखे हुए हैं पहले से ही थोड़े बहुत ही गलत रखे हुए हैं, मगर एटलीस्ट थोड़ा ट्रेस मिल जाता है. लड़कियों ने तो क्वालिफायर इतने उल्टे रखे हुए हैं कि वो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आदमी को एज अ मैन डिस्क्वालीफाई करती हैं. आपने वो कूल की लिस्ट में डाल दी. दूसरा एक बंदा पूरी तरीके से डिटरमिन कर चुका है आपको कि ही इज गोइंग टू चीट ऑन यू एंड यू थिंक दैट्स द कूलेस्ट. सारी लड़कियां इस पे मरती हैं, तो फिर बेचारा 2 लड़कियां तो दे दो उसको, और सारी लड़कियां को उस पे मरेंगी तो फिर तुम अकेली क्यों उसके लिए काफी. I mean, why are you so? How dumb is this equation? I don't. He's not going to change. He is not going to change. This is what I keep telling you. Well, that's the second thing you said. Love is going to. Maybe when he's 60. So wait till then. No, it's not. That's not how you have to look at it. Love does change, याद रखिएगा. मगर अगर उस बंदे को पता है कि अगली क्या सैक्रिफाइस कर रही है, लव इज अ बिग सैक्रिफाइस, याद रखिएगा. अगर एक बंदे को पता ही नहीं है कि लड़की क्या सैक्रिफाइस कर रही है, तो वो आप अपनी तरफ से कर भी नहीं होंगी, तो उस बेचारे को तो मेजर ही नहीं करना आता. मैं तो वही तो कह रहा हूँ, बंदा तो देखेंगे इस काबिल है कि उसको पता है वैल्यू का, कि क्या औरत कुर्बानी क्या देती है शादी में.
यू नीड टू अंडरस्टैंड, अल्लाह ताला बार बार बता रहे हैं, हर मौके पे अल्लाह ताला औरत को प्रायोरिटाइज करवा रहे हैं, बच्चों के लिए भी, शोहर के लिए भी, ठीक है। सो औरत क्या कर रही है, नॉट जस्ट फिजिकली बट इमोशनली ना, मोस्टली तो इमोशनल कुर्बानी होती है। सो मैं टिपिकली तरह सी डिफरेंट एडवाइस देती हूँ। इफ द कपल इज ऑलरेडी मैरिड एंड ही इज अ चीटर, वहां पे मेरी एडवाइस थोड़ी सी डिफरेंट होती है, बट you know, because I don't want the marriage to just break up suddenly. Let's give it a time. Maybe there is either one of them is a cheater बोले ना, और he is a cheater ना कहे ना खाली one of them is a cheater. ज्यादातर मेरे पास जाहिर है वही आती हैं जिनके हस्बैंड चीटिंग कर रहे होते हैं, but if she's not married yet and he's showing those signs, तो मेरी एडवाइस ये होती है, बेटा बेहतर है कि अभी खत्म कर दो। बिकॉज अच्छा, दूसरा ये जो आप कह रहे ना कि शोहर को, देखिए क्वालिफायर का ये मतलब नहीं है कि आप ये कहें कि देखें कोई एक रूल बुक तो रखनी पड़ेगी, 2 रूल बुक से आप खुद तबाह होंगे और वो भी होगी, मैं भी होऊंगा, मेरी बीवी भी होगी, 2 रूल बुक्स होंगी, तो प्रेमिस तो एक ही सेट करेंगे ना। सो अगर एक लड़की कहती है ना कि मैं तुझे इस्लाम पे क्वालिफाई करूंगी, मगर निकाहनामे में मैं बोल्ड इटैलिक रेड लिखवा रही हूँ, दूसरी शादी नहीं तू कर सकता, ठीक है, तो आपने पहले से ही उसको इजाजत दे दिया है। So that is another point where I would not agree with you. मैंने आपका एक लेक्चर देखा हुआ इसके ऊपर। नहीं, अभी तो मैं आता हूँ, मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपको इस पर कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ कि इस्लाम के ऊपर क्वालिफाई करना है और उसके बाद इस्लाम की रूलिंग तोड़ते हुए उसे कहना है कि ये रूल मैं तोड़ूंगी इस्लाम का, मगर तूने कोई रूल नहीं तोड़ना, तो वो कहेगा तू एक रूल तोड़ेगी तो 2 मैं तोड़ दूंगा, ठीक है। ये यहां तक कोई भी ऐसा रूल ना उसको दें, ही इज नॉट गोना गेट मैरिड अगेन। मैं बता रहा हूं, ज्यादातर पाकिस्तानी लड़कों में आजकल की दिन में हिम्मत ही नहीं है दूसरी शादी की, फिक्र ही ना करें, जो मर्जी बातें कर लें। सो इफ यू आर ट्रीटिंग हिम वेल, या सो बट इफ यू आर जेन्युइनली गोइंग टू बाय डिजाइन, खुद ही रूल तोड़ दिया आपने, तो आपने लेवरेज उसको दे दिए, फिर उसके बाद वो जस्टिफाई करेगा 2 नंबरी को अपनी। डोंट ब्रेक द रूल्स, ओके, योरसेल्फ, यू वांट हिम टू अपलिफ्ट द रूल्स। अब आते हैं आपके एतराज पे मेरी किसी वीडियो पे कि आदमी ज्यादा शादियां करनी चाहिए। आ रहा हूँ मैं, मुझे अस्यूमिंग आ रहा ना हो कि आपको क्या एतराज है। आपका मैंने एक देखी थी जिसमें there was this we could do it in another talk or we could do it in this one and continue it, because I feel कि let's set the premise कि number one, अल्लाह ताला ने ये दीन किसी को भी हर्ट करने के लिए या हक मारने के लिए या उसकी बर्दाश्त से ज्यादा होने के लिए नहीं बनाया। The deen is not meant to hurt anybody, number one, and it's fair and it's just and it's close to nature, according to nature. अच्छा, आप जो बात आपने एक वीडियो में किसी खातून ने आपसे बात करी थी, she was very hurt because she had apparently supported her husband in the early years of marriage through her income, and he didn't have a job and she put him through something, and of course, and when she was in her 40s and now he's making good money, he wants to have a second wife, and she was deeply hurt. She was in a lot of pain. That was the pain of betrayal. And you had advised her about kya aap unko, basically you are pushing him towards zina, and then that is a gunah kabira, and which one do you choose? And I could hear the dissatisfaction in her voice, or maybe that was my own mind, because being a woman, I could relate to that deep pain of betrayal. And I'll tell you what, मैंने शुरू में आके ये बातें की थी, मैंने बहुत लोगों को कहा था, क्योंकि मुझे ये लगता था अफेयर्स और औरतों के नंबर भी ज्यादा हैं, तलाक याफ्ता लड़कियों से कोई शादी नहीं करता। I thought maybe ये दूसरी शादी is the right solution. Maybe that's what people should be doing. But what we have to understand is that, Islam gives a lot of leeway to a certain nature that a person has, and the kind of environment that they have been raised in and what they are used to. Pakistani women, you have correctly identified, they are so dependent on men. This is about our animalistic instinct, right? We are dependent on men for our survival. ये हमारे अंदर genetically encoded है। वो मर्द जो है उसकी उस सर्वाइवल के लिए, उसकी ओनरशिप के लिए हम एक दूसरे से फाइट भी करती हैं, सास बहू से करती है, नंद भी बीच में शामिल हो जाती है, फिर सौतन भी आ गई है वो। So the kind of pain that it gives to a woman in Pakistan
when a man goes towards another woman is not the same as perhaps what would be felt by a woman in Arabia who's used to that. Uski nani ki bhi multiple सौतने थी, उसकी माँ की भी, दादी की भी, सबकी. So नहीं तो hold on, let me pause here. Okay, I'm not going to show you my cards here, मेरी क्या side है, but ये अरेबियन को क्यों बोलते हैं हम खाली? ये अरेबियन नहीं है, पाकिस्तान की नानियां भी 8-8 9-9 नानी है सबके घरों में. पाकिस्तान की 3 जनरेशन पहले भी पोलिगमी आम थी. मुझे ये आर्ग्यूमेंट कभी समझ नहीं आया. अरेबियन कल्चर में तो होता ही ऐसे, पाकिस्तान में भी ऐसे ही होता था. पाकिस्तान में पिछले 1950 से पहले की जनरेशन में 4-4 3-3 6-6 शादियां थी. Maybe in certain areas, maybe in certain areas. maybe in most areas. मेरी एक ही नानी थी, उसकी नाने की एक ही बीवी थी, मेरी दादी भी वो एक फौत हो गई थी. मेरी 7 नानियां थी, आपको पता है. I have 7 nannies. You were very fortunate. So no, what I'm saying is, no, I know so many people which I not just know, but I have data about people. 2-3 जनरेशन को छोड़ दे. हम अभी इस जनरेशन की, आपकी और मेरी जनरेशन, मैं आपसे बड़ी उम्र में, बट चले उसी एक ग्रुप में डालें. Yeah, okay, let me tell you where the problem is. I know where you're coming from. See, if a man is saying, you know what, I'm deep down in love with you, and he's trying to live up to that, and you're doing the same thing, then you're right about this. फिर वो आप उसकी दूसरी शादी करवाएं जरूर, तो वो ठीक है. वरना वो खुद कर रहा है, तो I understand why you're calling it a betrayal. With you on this one, through and through. Okay? इसमें किसी भी शक में नहीं हूं. मैं आपको कैसे मिसाल देता हूं. नबी अस्सलाम ने हज़रत खदीजा के होते वक्त कोई शादी नहीं होती. ओके? और अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत फातिमा के होते वक्त कोई और शादी नहीं की. The love had blossomed so deeply कि नबी अस्सलाम ने हमेशा अपनी हर बेगम के आगे हज़रत खदीजा के कसीदे पढ़े हैं, तारीफ की है, और बहुत हाई रिगार्ड और ऑनर किया. यहां तक कि ऑल ऑफ द उम्मतुल मोमिनीन यूज्ड टू टेल एवरीवन कि खदीजा जैसा कोई नहीं है मोहम्मद के लिए. ठीक है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. सो दैट बॉन्ड माइट can be argued कि you know what, that's a prime example कि you know what, all of the rest of the marriages came because of a lot of social requirements जो कि उस वक्त एक leadership role के अंदर प्रोफेसर ने पूरी करनी थी. And I know the सीरा through and through, so I know कि it makes perfect sense. He had to set the best example. यहां तक तो मैं आपकी आर्ग्यूमेंट के साथ हूं, मगर आप मुझे खुद बताएं, when I am telling you this right now, that if you're talking about love, then you're talking about through and through sacrifice. That's a very tough life which women don't want. Okay, मैं भी बता दूं आपको. So when you're going into more of a cordial relationship and then a love come, platonic friendship come, kind of a self-vested interest, sort of a mixture of a lot of things. तो कोई बात नहीं, ये भी ठीक है. सर्वाइवल के लिए आपको एक बंदा चाहिए, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए ऐसे, मगर क्लियर हो. डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ बाय सेइंग, oh, I'm in love as well, but you know what, I would throw him under the bus anytime I have to save either one of us. कि मैं इनमें से एक को बचाना हो तो मैं अपने आप को बचा लूंगी. That's not love. Okay, and it's okay. I'm not saying you're the villain here. कोई मार नहीं है इस मामले में. सोशल रिक्वायरमेंट्स के अंदर औरत की और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं. ट्रस्ट मी, आई नो कि अगर आपकी इस तरह की रिलेशनशिप नहीं है तो फोर्स करें अपने शोहरों को दूसरी शादी या तीसरी शादियों के ऊपर. मैं मानती हूं, मैं इस बात से अग्री करती हूं, बिकॉज आई हैव टोल्ड वुमेन that you are basically, this is denial of basic human rights because you're holding the guy captive. ज्यादातर अगर शरीफ आदमी है वो बेचारे अफेयर भी नहीं चलाना चाहते, वो क्या माँ बाप को जाके कंप्लेन करेंगे कि माय वाइफ डजंट एस्टैब्लिश एनी रिलेशंस विद मी. जो बंदा अपनी माँ बाप से अपनी बीवी की शिकायतें करता है वो तो पहली शादी के भी काबिल नहीं है. ठीक है, ये तो छोड़ देना उसको. तो वही मैं आपसे कह रही हूँ कि वो किसी से कह भी नहीं सकता. दे आर होल्डिंग हिम हॉस्टेज एंड दैट्स व्हेन आई टेल देम कि यू ईदर नीड टू लीव हिम or you go get yourself treated by a doctor or you let him have उसकी बल्कि खुद शादी कराए. ताकि मैं तो ऑनेस्टली मैं कई औरतों को कहती हूँ जो 50 में आ जाती हूँ, कहती हूँ बेवकूफो, दिस विल बी सच अ गुड लाइफ. you have served all the marital duties all your time. Now let him have another wife. तुम enjoy करो जिंदगी, तुम अब status का enjoy करो, तुम्हारे बच्चे भी बड़े हो गए हैं, तुम घूमो फिरो. This will be a very good life. And I've also
नॉट जस्ट दैट, आप तो देखें इस एंगल से आपने सही पकड़ लिया है। तो जिन भी लड़कियों की ना शादी में ऐसे मामला हैं जिसमें कोई ऐसा कोई अपेरेंट रोमांस ऑफ दैट लव स्टोरी नहीं चल रही, बट इट्स अ वेरी गुड मैरिज गोइंग ऑन, विच इज 90% ऑफ द केस, कि रोमियो जूलियट की कहानी नहीं चलती हर घर में, बट इट्स एन अमेजिंगली गुड मैरिज के हाँ सब कुछ बैलेंस में है, सब कुछ ठीक है। और उसके दौरान अगर आपको पता चल रहा है कि यार व्हाट दिस मैन इज कीप ऑन शोइंग इंक्लिनेशन, तो उसकी शादी करा दें दूसरी। मैं तो हैरान हूं कि आपको अब फायदा ही नहीं पता इस बात के। खवातीन को अगर पता चल जाए ना, जो कि पता कैसे चलेंगे, क्योंकि इतनी डेवस्टेटिंग तरीके से दूसरी शादी होती है एक आदमी की कि उसकी डिबरी इकट्ठी करता रहता है सारी उम्र वो, और औरत भी। तो वो तो देखिए साहिल, तरीका भी ठीक नहीं है ना, क्योंकि नो मैटर वही ना, वही तरीके की बात कर रहा हूँ। फिर उसके रिपरकशन बेचारा और बेचारी वो औरत बिट्रेड फील करती है, तो झूठ भी आ गया, डिसऑनेस्टी भी आ गई, चीटिंग भी आ गई, अब दूसरी को भी छुपा के रखा है, उसके साथ भी ज्यादती हो रही है। तो होल थिंग जस्ट नीड्स टू बी कंप्लीटली रिकंसिडर्ड एंड रिविजिटेड के ज्यादा मेजर नहीं, थोड़ी सी चेंजेस अगर बेस से कर देना तो लड़के भी ठीक हो जाएंगे, लड़कियां, ये दूसरी शादी के कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, कि थोड़ी सी बेसिक डेफिनेशन जो है ना वो अगर हम क्लियर कर दें, अगर लड़की को पता हो ना कि यार मुझे ये बंदा, देखिए मुझे नहीं पता ये कॉन्सेप्ट कहां से आया है, मगर पाकिस्तानी लड़की को आ गया है, ये गोरी को कभी भी नहीं आया था, याद रखिएगा। ये फिल्मों से नहीं आया, फिल्मों में ऐसे आता तो गोरी को भी आता। मैरिलन मनरो माधुरी दीक्षित से ज्यादा बड़ी स्टार थी, गोरी को तो नहीं आया, मगर पाकिस्तानी लड़की को एक कॉन्सेप्ट आ गया है कि हमें 100% फुल टाइम डोमेस्टिक हस्बैंड चाहिए। Where did you get this concept from? I mean, who's teaching you all of this? कि ये definition of a husband है कि वो 6 बजे छुट्टी करके घर आएगा और अगले दिन सुबह 8:45 घर से निकलेगा। This is a problem you guys are खुद अपने सर पे हलाकत डाल रही हैं आप। Let him be a very well-maintained, socially active animal. He has to be performing many things outside, वरना वो बोने पालेगा आपके बच्चों के बजाय। अगर बाप घर में डोमेस्टिक किस्म का डोमेस्टिकेटेड डोंकी है, उसके बच्चे कभी भी लीडरशिप रोल में नहीं आ सकते। सो अगर आपको ये मसला है न्यूक्लियर फैमिली का। अब बीवी की सारी एक्सपेक्टेशंस खाविन से हैं। ही हैज टू बी माय बेस्ट फ्रेंड, he also has to be romantic, he has to be sexy, he should be mysterious, but he should also never hide anything from me. I should be his best friend. ये सारे रोल्स जो कि हो ही नहीं सकते। This is all now नहीं हो सकते हैं, मगर उनकी डेफिनेशन ठीक हो जाए। बेस्ट फ्रेंड का मेरे 2-3 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, मैं हर वक्त घर पे रखता हूं उनको। मतलब मैं क्या करूं अपने मेरे You cannot be mysterious and then be as an open book. You can't be two things at the same time. It's there needs to be some privacy. No, I know that's not why they don't mean mysterious as if he has something to hide. They mean mysterious as that he's unpredictable in certain circumstances. He's on the spur and very charismatic at the same time. I get that, but best friend आपने बनना है, जो कि मैं बहुत कॉमन सुनता हूँ ना मैं भी, कि my wife is my best friend, my husband is my best friend. That does not mean कि he has to be in the room all the time. My best friends are my best friends because whenever I need them, they're going to perform according to whatever my expectations are from them. That's why they're my best friends. और बिल्कुल ऐसे ही आपका शोहर भी और आपकी बीवी भी ऐसी होनी चाहिए कि भाई आप मुझे किसी भी मौके पे इमोशनल जरूरत है तो you're the first hand that has to reach towards me. Okay, that's it. आप अगर मुझे इमोशनल जरूरत नहीं है, अगर आपको रोज ही इमोशनल जरूरत पड़ रही है, तो आपको फिर डॉक्टर की जरूरत है, हस्बैंड की नहीं। क्योंकि आपको ऐसा क्या मसला है जो रोज आपको एक डीप डिप्रेशन की फीलिंग आई, आपको शोहर चाहिए आपको हर वक्त आपके साथ, तो दैट्स देयर इज अ मेडिसिन फॉर इट। मैरिज इज नॉट दैट मेडिसिन। एंड इफ यू आर अ नॉर्मल गर्ल, नॉर्मल पर्सन, you do not need your husband 24/7 in front of you. That's also a disease. That's a condition. That's a problem. It's a control issue. It's a control issue. It's a self-esteem issue. You should have your own set of friends. You should spend your own healthy activities. बहुत सी चीजें, और उसमें of course you have the marital boundaries as well. आपका मेरा ख्याल है टाइम ज़्यादा हमारा साहिल, we have to do some follow-up talks because there are topics that I would love to go deeper into with you, about not just correcting this affair epidemic, but really about this character building thing, the different ways that we can help people build self-esteem and confidence. And I agree with you. Islam actually was the curriculum
for all of this. It is the curriculum for emotional intelligence. और देखें, अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री को देखें तो पहले 12-13 साल, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, पहले 12-13 साल क्या हुआ था? आई मीन यही तो हुआ था, तकवा ईमान, दैट इज व्हाट वाज टॉट टू द मुस्लिम्स इन द बिगिनिंग. तरबियत जो थी वही तो फिर जाके वो मुजाहिद बने थे जो इतने फिर पूरी की पूरी दुनिया चेंज हो गई. और मुझे होप इस बात से मिलती है कि जितनी बिगड़ी हुई कौम वो थी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम का मैसेज लेके आए, और जिस तरह फिर वो ट्रांसफॉर्म हुए. अब वो हस्ती हमारे दरमियान में नहीं है, लेकिन उनका मैसेज है, उनकी जात का एग्जाम्पल है. अपनी तई एक छोटी सी कोशिश करके देख लेते हैं. आगे तो रब की मर्जी है कि वो किसको हिदायत देता है, किसको नहीं. अल्लाह हमें ही हिदायत दे दे तो बहुत बड़ी बात है, बट एक कोशिश करने को दिल चाहता है, क्योंकि दिल बहुत दुखता है कि मुसलमान कौम इस वक्त जिस बुहरान से गुजर रही है. दिस इज माई पर्सनल कंसिडर्ड ओपिनियन that the fastest solution to empower the Muslim Ummah is to empower women, because women are the, they tarbiyat ki god jo hai wo maan ki god hai. Empower your women for anything. आप अपना GDP बढ़ाना चाहते हैं पाकिस्तान का, औरतों को empower करते हैं. They are going to, when women earn money, they also spread it in the community. कितनी इसके ऊपर researches हुई हैं, आप I'm sure जानते होंगे. Empowerment of women is so important right now. But when I say empowerment of women, I am not asking for this caricature feminist movement, right? जिसकी वजह से अमेरिका में अब actually historical, the anxiety rates have skyrocketed in the West since women got their so-called liberation. What I'm asking for is not कि आप कोई जिद्दत पैदा करें. मैं कहती हूँ जो जिद्दत पैदा की गई है ना पिछले चंद 100 सालों में, उसको खत्म करें. हमें वो राइट्स चाहिए जो अल्लाह और अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले दिए थे. हमें वो वाले राइट्स चाहिए. And let's talk about it more. Let's educate people, because women don't know what their rights are in Islam. They really have no clue. True. Let me open up the spectrum of personality development के अंदर कैरेक्टर कहाँ प्लेस करते हैं in the next session, so that गर्ल्स को मेजर पता चल जाए कि भैया मेरा घर itself जो है ना, वो क्या मेरा कैरेक्टर बिल्डिंग मशीन है तो कैसे यूज करूं, और या फिर कैरेक्टर डिस्ट्रॉइंग मशीन है तो या है तो फिर मैं क्या करूं. हाउ डू आई एक्चुअली रिएक्ट टू इट एंड असेंबल माई सेल्फ इंडिपेंडेंटली. ये इसकी थेरेपी है जो कि हर बच्ची कर सकते हैं खुद भी, बट ओनली इफ दे नो कि बिग 5 पर्सनैलिटी टेस्ट असेसमेंट कैसे कर लूं मैं बेसिक असेसमेंट, साइकोलॉजिकल नहीं तो इमोशनल प्रोफाइल असेसमेंट ही कर सकूं अपनी. सिंपल से मैकेनिज्म्स हैं, सो दे वुड नो कि भैया ये तो this is a very simple game, or my culture is not going to help me, then I got to do it myself. क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो पाकिस्तानी होने की वजह से फायदे में जाती हैं, मगर ज्यादातर चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ पाकिस्तानी होने की वजह से लड़की को नुकसान होगा ही होगा उसका. That I agree. अब हमारे पास एक्चुअली इतनी एक्सक्यूज नहीं रही. मे बी आज से 10-15 साल पहले नॉलेज इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं थी. We were restricted to certain mediums. अब आप उनको जो भी कह लें, उलमा के हाथ में जो कुछ भी था. अब लेकिन YouTube ने जो खोल दिए हैं, सोशल मीडिया ने जो चैनल्स आपके लिए खोल दिए, that's how I discovered you. I don't think anybody now has the excuse to say कि जी हमें तो ये पता ही नहीं था. Well, yeah. Find out. Educate yourself. Quran is a book of knowledge. वो आप भी जो कहते हैं ये चूम के आंखों से लगा के ऊपर रखने की या वजीफे पढ़ने की कि मेरा रिश्ता हो जाए तो मैं वजीफा कर लूं, ये उस चीज की किताब नहीं है. It is a book of knowledge. It is a living book. It will interact with you. It will guide you. It is amazing. इसको पढ़े, इसको समझे और इसमें से गाइडेंस लें. Not, and I always say, translation of the Holy Quran is not the Quran. Tafsir of the Holy Quran is also not the Quran. It is somebody's opinion about what they think Allah Ta'ala is saying. So if you're going to read the Quran, open up 10 tafsir and 10 different translations, and don't stop until your heart is satisfied.
बिकॉज यू मुझसे लोग कहते हैं आप कैसे कह सकती हैं, स्कॉलर्स ही सिर्फ कुरान समझते हैं और कोई बंदा समझ ही नहीं सकता। मैंने कहा ये स्टेटमेंट ही कुफर की है, बिकॉज फॉर एनीवन अदर देन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू क्लेम दैट दे हैव अंडरस्टूड द कुरान इन इट्स एंटायरिटी एंड नो अदर वर्जन इज पॉसिबल इज कुफ्र। दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज कुरान अल्लाह का मैसेज है, इट इज एन इन्फिनिट बुक, ये रहती दुनिया तक लोग डिस्कवर करते रहेंगे। नहीं, ये तो हदीस है, आप सुनाए इन लोगों को। हदीस ये कि कुरान आगे पहुंचाओ कि क्या पता सुनने वाला तुमसे बेहतर समझ जाए। हाँ, तो बस फिर लोग क्यों नहीं करते ये? बस ये जी हमारे उन्होंने ये बताया था, और इस देखें ट्रांसलेशन में ये लिखा हुआ है, भाई कुछ और आगे बढ़ो, 10-15 ट्रांसलेशंस देखो। दिल जब तक मुतमईन नहीं हुआ, जो मैं आपको अपनी जर्नी बता रही थी, मैं तो अल्लाह से लड़ती थी, मैं कहती थी या अल्लाह मैं नहीं मुतमईन हो रही, अगर तेरा मैसेज है, तेरी किताब है, मुझे समझा दे, तू मुझे समझा दे। फिर कहीं ना कहीं से वो मैसेज समझा देता था। And it would come to me. Sometimes you just literally are reading an ayat and suddenly it opens up in front of you. Oh my God, I never saw it this way. वो समझा देता है। Mashallah. You know what? Your energy is so free flowing, mashallah. Your energy, your asset. Mashallah. Thank you. I wish you'll talk about the Quran more. मैं बता रहा हूँ, आपको पता भी नहीं होगा, लड़कियों ने कुरान में गौते लगाने हैं अगर आप कुरान को ज्यादा प्रोपेगेट करेंगी। मैं तो बता रही हूँ, कुरान अल्लाह ताला मेरा वो बेस्ट फ्रेंड है, ही इज माई एसेट, मैं ये कहती हूँ भाई, वो कहता है मैं शारक से ज्यादा करीब हूँ। साहिल, आपकी शारक किधर है? क्या आपकी स्किन के ऊपर है या आपकी स्किन के अंदर है? अंदर है। आप अपनी शारक को छू नहीं सकते, आप स्किन की उस जगह को छू सकते हैं जहां पे शारक होगी। तो अल्लाह फिर यानी आपसे, आपकी जात से ज्यादा करीब है। What more do we need to know after that? True. The king of kings, the ruler of the universe, the owner of everything is closer to you. And I also say, I will end with this. मैंने आपको कहा था मुझे बोलने की बहुत आदत है, that the most tragic ये जो शेक्सपियरियन लव स्टोरीज होती है ना, the most tragic story of unrequited love is that of रब विद हिज बंदा। पूरी उम्र हम उसकी रहमतें, उसकी ब्लेसिंग्स ले लेके और लोगों की मोहब्बतों में भिखारी बन के फिर रहे होते हैं, और उसकी मोहब्बत का जवाब मरते दम तक नहीं देते। आंख बंद होती है तो समझ आती है कि हाँ वो तो इंतजार में था कि कभी मेरी तरफ बंदे प्यार से भी तो देख, तू तो डेबिट क्रेडिट के सिस्टम में ही फंसा हुआ है, हर दफा सिफारिश लेके आ जाता है, कोई चीज चाहिए कुछ, चल मैं तुझे फिर भी देता, कभी प्यार से तो देख मेरी तरफ, कभी कोई 4 बातें प्यार की भी कर ले। मेरा तो उसके साथ यही रिश्ता। आपको सुनाऊंगी कभी अपनी शायरी ऐसे। आई एम नॉट अ पोएट, आई जस्ट डू फ्री स्टफ, समटाइम्स इट कम्स टू मी, बट आपको भेजूंगी कभी। ओह श्योर, फॉर श्योर इंशाल्लाह। I'll tell you something. जब आप बोल रही थी ना कि आपका बेस्ट फ्रेंड अल्लाह, और एंड आई एम थिंकिंग मेरा बिल्कुल डिफरेंट एंगल अल्लाह को देखने का। सो आई I'll tell you, it's not very easy to swallow. I'm telling you this right now. But अगर आप पे मुसीबतें नहीं ना आ रही तो आपको अल्लाह से प्यार नहीं है। That's a very hard statement to swallow. मैं 100% एग्री करती हूँ। मेरी तो जिंदगी मुसीबतों से भरी हुई है, भरी रही है। मैं आपको बताती हूँ, अभी I'll give you, my mind has changed so much, साहिल, कि रब एक्चुअली ये जो कब्ज और रब्त का कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, जो इन्ना माल उसरे युसरा फइन्ना माल उसरे युसरा, ये एक्चुअली आपके लिए एक ब्लेसिंग होती है। मुझे अभी ना कोविड के बाद अभी कोई साल हो गया, आई स्टार्टेड गेटिंग दिस फुलबेरी, ये जो मैं गोस्टली वाइट हो गई हूँ ना, इट्स बिकॉज आई गॉट फुलबेरी, यू नो व्हाट दैट इज, vitiligo, and it's a rare form where I'm not completely white, but it started to get discolored. And it started spreading very fast because it's an autoimmune disorder. So apparently I was a carrier and COVID triggered it. Ab now having to be on camera, and then I was going to do some speaking engagements in America also. और वो इतनी तेजी से फैली थी कि मैं सुबह उठती थी तो वो जो चित्री मित्री मुर्गी होती है ना, मैं वो बनी हुई थी, and it was just all over my face. And I looked at it, and my friends were saying कि तुम तो इतनी self conscious होती थी, but तुम आराम से फिर रही होती हो, मेकअप भी नहीं करती, you don't care. And I said, yeah, why don't I care?
And I looked at myself in the mirror in the morning. और यकीन करें ऐसे मुझे जवाब आया, I don't care, because मैं सोती हूं तो मेरे कम धब्बे होते हैं, मैं उठती हूं तो ज्यादा धब्बे होते हैं, and yet I have felt no pain. अगर वो चाहता तो इसको पेनफुल भी बना देता, फिर मैं क्या करती? So the fact कि it is so painless, I am so grateful to Allah Ta'ala, क्योंकि वरना मैं क्या कर लेती? दर्द में होती, तकलीफ में होती. So I have trained, and I'm not saying this is perfect. This is a mechanism I use. So, as you use those neural pathways, they build. So now musibat comes and I automatically start looking for, okay, what is Allah Ta'ala's wisdom in this? What is God trying to show me? What are you showing? पूछती हूँ उससे, अल्लाह तू क्या दिखाना चाह रहा है? तू मेरे लिए क्या बेहतरी करना चाह रहा है? So I do go through, and I haven't even shared 1/10 of my life story with you. One hardship after another. उसने इतना दिया, इतनी तकलीफ दी, ऐसे दिल को ऐसे ऐसे करके उसने एक झूमर निकाला कि वो नरम पड़ गया, वो नरम हो गया. अब मुझे उससे है बहुत मोहब्बत है, और देता है वो, मुश्किल भेजता है मुझे. मेरी बेटी was one of the first ones to have COVID in Pakistan. It was terrifying because I'm talking about a kid raised in America with a very poor immune system, not used to all the, strong immune system in Pakistan. And she had just gotten over typhoid. I was terrified. I was terrified as a mother. शुरू में आपको याद है कि they were saying कि बस जिसको COVID हुआ बस fatality. खत्म है वो बंदा. Yeah, true. 22 साल की मेरी बेटी, and 2 मिनट के लिए हिल गई बड़ी बुरी तरह से. आई वॉज जस्ट शेकन टू माई कोर कि मेरी बच्ची को कुछ हो ना जाए. उसके बाद 2 नफल सजदे के पड़े और कहा, यार अब ये बच्ची मेरी नहीं है, ये तेरी है, और अगर तूने मुझे ये आजमाइश देनी है, पहले तो आई एम बेगिंग यू कि मुझे ये आजमाइश मत देना, और अगर तूने ये आजमाइश दी तो फिर ये अब मेरी डिमांड है तुझसे कि फिर तू मुझे हौसला और सब्र तू देगा, क्योंकि मैं नहीं कर सकती. आई वॉन्ट टू नो दैट यू विल हैव माई बैक, एंड देन वट एवर योर विल, इट इज माई विल. आप यकीन करें, ऐसे दिल में सुकून आ गया, सारा डर निकल गया, सब कुछ निकल गया. और माशाल्लाह शी इज अलाइव एंड वेल, अल्हम्दुलिल्लाह. अल्लाह ने डिजाइन ऐसे किया कि आई कुड नॉट मूव टू पाकिस्तान because of my children. I had custody का issue था, so they were stuck in Pakistan. सब आर्मी में, they couldn't do anything for their sister. अल्लाह ने डिजाइन की थी ये मेरे 30 years कि ये अकेली धक्के खाएगी, ये अकेली कुट खाएगी, ताकि इसको मेरे ऊपर रिलाय करने का तरीका समझ में आए. और फिर मुझे नहीं पता था कि उसके बाद मैंने जाके पाकिस्तान में लोगों को समझाना था ये, और फिर जूतियां यहाँ पे भी खानी थी मजीद. तो यही तो खूबसूरती है पूरे प्लान की. अभी प्लान बीच में है, प्लान अभी खत्म नहीं हुआ. सो यू हैव टू सी व्हाट्स गोना हैपन. अल्लाह जानता है, उसकी मर्जी. तो देखिए, अल्लाह बेहतर जानता है. बट आई एग्री, लोगों का ब्लूप्रिंट डिफरेंट होता है ना. किसी का ब्लूप्रिंट खशियत का होता है. माय फादर इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ सच ब्यूटीफुल तवक्कुल बेस्ड ऑन खशियत. हिज रिलेशनशिप टू अल्लाह ताला इज वेरी डिफरेंट देन माइन. So, जो आपका ब्लूप्रिंट है, आपने उसी से अल्लाह पे कनेक्ट होना है. मेरा ब्लूप्रिंट ये दीवाना और आशिकाना है, और उसने शादियां तुड़वा दी, पर फिर उसने कहा चलो मैं तुम्हारे लिए फिर ये रोल अदा करता हूँ. आई विल बी योर केयर टेकर, आई विल बी योर कवाम. तो बस ठीक है, फाइन, इट्स गुड, ऑल गुड. या अल्हम्दुलिल्लाह. और क्या, इससे बेहतर क्या होना है कि जो डायरेक्ट अल्लाह से मिल रहा है. आदमी ने और औरत ने क्या देना किसी को. आई थिंक, एंड दिस इज, आई कुड बी रॉन्ग, जब तकलीफ पड़ती है ना, जो मेरे पास औरतें आती हैं वो तकलीफ की वजह से आती हैं. तकलीफ पड़ती है तो बंदा अल्लाह को फिर ढूंढता है, सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करता है. एक 14 साल की लड़की को अभी कोई होश ही नहीं है, इतना इंटरेस्ट नहीं है. ये लोग ठीक हो जाएंगे ना, इस एज ग्रुप वाले, इनके बच्चे खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे. I know, you're right. मैं उन्हीं को बात करना, उन्हीं बच्चों से कि यार ये वाली गलती ना करना, तेरी और मेरी अम्मी ने की है. That's what I'm trying to. If you're going to focus on women, focus in these late 20s to mid 30s wali ladkiyan, because they are just experiencing the pain of a painful marriage or whatever it is, and they want to change. और ये change होती हैं बड़ी quickly. इनका मैंने देखा है. They change quickly. बिल्कुल सही कहा है. Hiram, thank you so much for your time. I swear, I mean it. I'm gonna. Had such a good time. Hiram, again, thank you. Okay, it's quite an honor.